friends. Welcome to the another session of Slight Alumni Association. And this session is very different from the earlier sessions because number of participants are more here. And from the last 2 3 sessions, we have started with a new thing where students are also participating in the sessions. So there is a representation of students as well here. So I would first of all like to introduce myself. I am Sarabjit Singh Puri, and I am GIN 1995 batch, and we are running the show in order to give our fraternity a chance to give an exposure to our institution, as well as giving more better guidance to our freshers and the students of this of our alma mater. So first of all, I would like to welcome all of you, Sanujji, Vikram Nandaji, and Ankit, who have come here and who have on Sunday morning, you have taken your time. Thank you very much for coming. So first of all, I would like to introduce Sanujji. Sorry, Ankit. Ankit is a student from Slide. So Ankit, would you like to introduce yourself a bit? Thank you, sir, for providing me this opportunity. It's a great honor for me. My name is Ankit Kumar Singh. I am final student of mechanical engineering with honors in welding technology. It's a very honor for me to participate in this meet. Thank you, sir. Great. What are your aspirations, Ankit? What do you want to do in your life, and what do you see in the future in the next 5 years? Kind of. Please mention this also. Sir, my aim in my aim is to join welding industry. I want to work in welding industry, and my area of interest is welding and welding metallurgy. Okay. Sanuj I will welcome Sanuj Goel, who is welding expert, known, and he's an I would say many things he have done, IWT and all that. If I'm saying right, so sometimes I forget this thing. So Sanuji, please you tell in detail about yourself. Yes. Thank you, Burisa. So, good morning to everyone. My name is Sanuj Goel. I'm GWT 95, 98 pass out. Currently, I'm heading the assembly and surface coating in a German MNC, which is engaged into railway business. And I did my IWE International Welding Engineering from Duisburg in 2008, long back. But now, more or less, I'm engaged in assembly processes and kind of got exposure now to special processes, configuration management, traceability. So this kind of stuff I'm handling now. And welcome Nanda Saab. Welcome from Dubai. He has joined from Dubai early morning. Thank you for for joining in early morning, that too on Sunday. Yes, sir. Please, you Thank tell you. about yourself. You are already a very well-known face in mechanical industry as well as a mechanical enthusiast in our college. Please, sir. Thank, thank you, Puri Sahab. Myself, Vikram Singh Nanda. I am a batchmate of Sarabjit Singh Puri, Sanuj Goel. We are pass out 1998 pass out from Sant Longowal Institute, and I passed out in welding branch, and after that I did my masters in metallurgy in IIT Roorkee, and in continuation I also attempted PhD studies in IIT Bombay, and it was a very rich experience of research in IITs, in continuation for 7 years after BTech. And after BTech I basically joined my passion was, as rightly Ankit has said, my passion right from the graduation, it was welding only. I was very much inclined towards welding, metallurgy, iron carbon diagram, TTT diagram. These were like my blood. It was flowing into the blood. So I was very inclined towards heat treatment studies. These were my passionate areas of heat treatment of materials. So, with proper guidance at the final year from our guide, Dr. PC Gupta, he came for a couple of years from IIT Roorkee, and he personally guided me one fine day, that you should go for further studies.
and explore your passion there. So rightly I said, I went for IIT Roorkee in masters. And after that, the things are opened up. When you go for further study, things open up more and more for you. You expose yourself to the outside world, and you listen more and more opinions. So with the proper guidance at IIT Roorkee, one of the professor told me, why don't you go to for research studies at IIT Bombay? So IIT Bombay at that time was better than IIT Roorkee. Of course, Roorkee is a small place. Bombay is a Bombay. We all know that. So I went to Bombay, and then 5 years spending in IIT was a big turnover in my life. Big turnaround. So that I exposed myself huge way, and I was also like Ankit. I was also placement coordinator for my department in 2005 in IIT Bombay from PhD. There is a separate placement coordinator for BTech, MTech, dual degree. At that time, I think dual degree was there. So PhD. So from the PhD metallurgy department, I was placement coordinator. So I was doing exactly what Ankit is doing right now. I was trying to. I was participating in enthusiastically in international conferences, and in international conferences, I was not only selling myself and my research in the terms of papers, but I was also understanding that these are the companies which are looking. When you go to the conference, you go to the exhibition section. In the exhibition section, that is the key. The conference, you present your paper one day and that's it, you are done with that. Then I would suggest you go into the exhibition section and see various, meet people personally, interact with them and talk to them. What are their products? Go to the welding, who makes welding rods, who makes fluxes, who makes welding machines. So these you interact with them, you show your interest, you show that you want to know more about their product. So they will, you exchange your business cards and all that. Then things were built up from that angle. Then later on you contact them, right? You contact them, you never know. One of the company, I remember one of the company, Mahindra and Mahindra, during my one of the international conference, offered me a job. They then on the spot. I actually said this in the previous my lecture. So it is very important. You need to expose yourself in international platforms and talk to people, discuss, express yourself, express your interest. You should look like you're a passionate jerk, who just desperately want to do a job and desperately want to induct in that company. So they should see a passion in you. So that's exactly happened with me. I first company came from NASA, America, and I given an interview along with 150 people, and I was selected first Great. campus. I was a placement coordinator and I was selected. And I purely selected based. It was a fuel cell company. It was nothing to do with my experience. Only they find my passion and my passion for microscopy, because they need a microscopy SEM, scanning electron microscopy expert. And they see my passion and they just decided that we this is the person we need. And I excelled very well over 5 years in that company as a from I senior engineer to staff engineer, senior staff engineer. All these levels I got promotions. And my and the key was not knowledge. Please mind it. My success key was never been a knowledge. It was passion. It was passion for study, passion for sharing knowledge. So that thing was very helpful. And then I shifted my jobs, because after some experience you explore yourself more. So when and you also understand that yet you can go in some other way to explore your passion. So I went to UAE in 2013, where I am right now. My daily routine job is welding, mechanical engineering, metallurgy, heat treatment, and failure investigation, and managing people, and everything which I am right now. I am doing in my day to day life. So this is what me. And I want to share my experience of 22 years after we passed out from BTech. I really, I know that I am right now landed at this position. And what exactly I should have known, that
my success time can be shortened. So I want to share that thing with my juniors or anybody else. I do it day in day and night, in my LinkedIn. You connect with my LinkedIn, and this is what, right now, as Puri said, we all our efforts are to develop people, to direct the people to the right direction. Thank you, Nanda Saab. It was such a fantastic introduction as well as a very good guidance to all of us, because the passion and the learning is the key to success. And success is nothing, it is basically to keep our mind. Success is something which to keep our mind satisfied and relaxed. That if your mind is satisfied and relaxed, it means you are successful. And this is where the goals and the learning and the passion comes in. When you're passionate enough, and when you are always open to learn, then you automatically succeed. When you succeed, you get satisfied. So this is what exactly is the overall Perfect. key. So I would like Sanujji, will you upload the presentation Yes, as well, yes, or you sure. would start with the? Okay, No, please I'll upload the upload. presentation. Yeah, please. You can go to the present tab. Yeah, just so once visible, just tell me. Is it visible? Yes, yes, No, no. Yeah, it is visible now. Yes, sir. Now it's visible. It's visible. yes, sir. Sanujji, Okay. over to you. Okay. So thank you, Purisab, and good morning to everyone. So this is about the introduction about special processes. I personally feel this will be more useful for the people who are about to pass out or has just passed out, because I personally feel there are a lot of very less people who has clear understanding what is the difference between a process in general and special process. So considering the process is a set of preset activities which changes the fit, shape, or function of a product or a commodity to make it sellable. But special process is a bit different from the regular process. So uh, about the introduction of the special process, a process used in manufacturing either or construction of any infrastructure or maintenance, where the conformity of the resulting product cannot be readily, technically, or economically determined without destructive analysis prior to its use, is referred as special process. So what it means, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस वर्क जहाँ पे उसके आउटपुट की क्वालिटी को बिना डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग या बहुत एक्सपेंसिव नॉन डिस्ट्रक्टिव के बिना कंफर्म नहीं किया जा सकता, दैट इज अ स्पेशल प्रोसेस. लाइक वेल्डिंग इज अ स्पेशल प्रोसेस, क्योंकि जो आप एक बार प्रोडक्ट आउटपुट दे दी, रियली आप यू कैन नॉट बी श्योर, अगर प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है तो आउटपुट श्योर नहीं हो सकती. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेशल प्रोसेस. So in my presentation, I have kept very few things, so you can keep on interacting because there is very less written. So I will be elaborating only. So as per ISO and IRIS, IRIS is specifically for the railway industry, International Railway Industrial Standard, and ISO is general standard which is followed for mainly in automotive. So there are certain predefined special processes like bonding and sealing. Bonding is adhesive bonding, like the special adhesives from Henkel, 3M, etc., which are used for the bonding. Like for the example to correlate in the daily business is the bonding of car screens, this glasses, front or rear glass. The welding, brazing, and soldering. Then is the torque tightening. Then press fitting and force fitting. Press fitting, like if we push any bush into a housing or something, where there is a predefined force. Then crimping of electrical connections, harnesses, heat treatment, stress relieving, complete surface coating, which includes painting, plating, phosphating, anodizing, passivation. So all this comes under special process. Then 3D printing, which is quite a new technology. This also comes under special processes, casting and forgings. These all comes under special process. Besides this, some customers also define additional processes as a special processes.
So to control special processes output, input elements to achieve the consistent output. One first is the management, how to manage the processes, how the resources are made available, manpower, machines. Then fourth is method, fifth is material, sixth is mother nature, which is environment. Nowadays, people consider measurement also a seventh element, which is being considered right nowadays as a control parameter. So, what does the management means? Management of the special processes influences the input elements as well as the output elements. The special process management includes the roles and to define the roles and the responsibilities in the special process management. That who will be the special process coordinator, who will be the special process operator. So all this. How the risk management is done. So that is done through PFMEAs, which is process failure mode effect analysis. Then is the process qualification, how you qualify the process. Then the process validation. Once it's qualified, periodically you have to validate the processes so that you are sure that processes are under control. Then process control and monitoring to define the indicators, which gives you the confidence that if these indicators are under control, will automatically say that the processes are under control. Then is the non-conformity management, because whatever process, how many robust the process, there will be some non-conformities. How to control that non-conformities, how to salvage that, how to rework that, because you cannot scrap everything. Sometimes you have to rework. So that comes under non-conformity management. Then the change management. There are some design changes or process changes. How to track them, how to transfer them, how to revalidate them. There is the transfer management. Transfer management, sometimes you have a process in-house which you like to transfer to supplier, or you have a process at supplier which you want to bring it in-house, or from one country to another country. So that comes under transfer management. That is the supply chain management. Supply chain management includes the consumables, etc., which how the supply chain has to be managed. Then is special processes, audits, inspections. The audits are done to revalidate or recheck where we stand. So can you go to the last? Yeah. yeah, please. So I would like to ask a question here. Like as you talking about the first point is roles and responsibilities in special process management. I Yes, believe this is one of the most important aspect of correct. doing anything. You know. So Anything, correct. if you take an example of, let us say, a special process of welding only, or Right. specific type of welding, you can take the example as you are an expert in this. So in that particular case, what is the process which is being followed in order to you know the process management, how to define the roles, how the responsibilities are being fixed, and what are the parameters which you look in people in order to select them for those particular roles and responsibilities? If you can Okay. give a bit Yeah, of yeah, sure. light on that. Sure. So considering if we consider the welding, so any organization, if they are engaged into the welding business, whether they are doing in-house welding or they are designing, let us take examples from starting from the design, because if the design is there, then you have a supply chain, then you have manufacturing, then you have deliveries and the quality control. So अगर आपका सिर्फ डिजाइन है, so मैनेजमेंट में आपको डिजाइन में किस टाइप से प्रोसेस कंट्रोल रहेगा, देयर विल बी अ वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर व्हिच हैज टू बी डिफाइंड. उस वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए as per if the company organization goes for the EN certification, EN 15085-2, then he has to be or she has to be qualified as per ISO 14731 as IWE or IWT, welding engineer or welding technologist. Those will be defined as a welding coordinators. Now comes to their roles and responsibilities. Their role starts from the starting of the design phase till the deliveries. They are not actually designing the welding this, if you say a fabricated structure, that will be done definitely by the designers who will do the FA analysis, all kind of analysis. But then these drawings, preliminary drawings, will be handed over to welding engineer to check the accessibility, approach, kind of strengths are sufficient or not. So here comes the roles of the welding engineer to release the design phase. Then once their design is released, Sir, I have a post, doubt. Yes, yes. Sir, when design hello, engineer, sir, during design, when design engineer check all the aspects just like strength or all the things, then what is right. the role of measuring the strength or analysis of strength of welding engineer? Welding engineer has to check the approach, because sometimes designers do not check that approach.
and there comes the issues with the approach is not there, and you cannot do a proper weld and joint. Sometimes that's why if you see as per the new guidelines of EN, or if you see the new drawings, especially which are by the organizations who are the MNCs, the designers nowadays don't define the design joint detail. The joint detail is the definition has to come from welding engineer. joint डिटेल कैसी होगी, सिंगल ग्रूव है, डबल ग्रूव है, किस टाइप का, फुल पेनिट्रेशन है, पार्शियल पेनिट्रेशन चल जाएगा. So that is the role of the welding engineer during the design phase. So it's basically accessibility, right? So sometimes accessibility, yes, accessibility is one of the key. Because design engineer will design, he will say that okay, यहाँ पे आप वेल्डिंग करो, तो पर वहाँ पे वेल्डर पहुँचना भी चाहिए ना, इलेक्ट्रोड रॉड भी पहुँचनी चाहिए वहाँ पे वेल्डिंग कौन सी करनी है. यस, अगर वेल्डिंग का जो प्रोसेस है उसके साथ उसका यूनिट होगा, वो यूनिट भी वहाँ पे जाना चाहिए क्योंकि और ये सारी चीजें शायद सानुज गोयल असेसिबिलिटी के अंडर बोल रहे हैं, राइट? बिल्कुल. आपको किस टाइप की वहाँ पे अगर उसको मान लो फुल पेनिट्रेशन या फुल स्ट्रेंथ वेल्ड मारना है, तो हो सकता है उसको रूट पिक से मारनी हो, उसका डिजाइनर से कोई लेना देना नहीं है. डिजाइनर जो उसका एफए एनालिसिस करेगा वो उसको एक फुल इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ का जॉइंट मानते हुए करेगा. उसको नहीं पता हम एक्सेसिबिलिटी के लिए या रूट पेनिट्रेशन को ठीक लाने के लिए या लैक ऑफ पेनिट्रेशन अवॉइड करने के लिए टिक वेल्डिंग प्लस उसके बाद मैग या मिग का जॉइंट मारना. दैट इज द रोल of the welding engineer. Even the safety aspects, the safety aspects of the welder during the welding, proper ventilation, everything, yes, that comes under the welding engineer role. Designer will just say that okay, यहाँ पे मेरे को weld चाहिए, और वो वहाँ पे weld possible है कि नहीं है, या proper safe तरीके से वहाँ पे weld कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपको वो जो qualified welding engineer coordinator है उसकी जिम्मेवारी है. Then once the design is over there, then it is the responsibility of the welding engineer to get the WPS welder qualifications created. So where does all the details come? What will be the preheat if it is required? Then how much? If there is a multi-pass welds, then how much will the interpass temperature? How to control it? What will be the post heating? Stress relieving required or not required? All this has to come under in the WPS and the welder qualification. These are all the responsibilities. Then responsibility includes the validation of the consumables. They are controlling quality checks, whether the welding rods, electrodes, fluxes, their batch, their metallurgy specifications, they are all as per the requirement or not. This is the responsibility of welding coordinator or the welding engineer. So this is how the management comes to. Sanuj, is it even a post welding inspection also comes under that? It depends on the organization. Some smaller organizations keep it with the welding engineers, but larger organizations they give it when there is special quality department, NDT which also is who is also qualified welding engineer normally, but that comes under the role of that depends basically on the organization role पे depend करता है, क्योंकि जनरली कई कंपनियों में वेल्डिंग इंजीनियर्स एसक्यूए के अंडर रहते हैं, कई कंपनियों में वेल्डिंग इंजीनियर्स इन हाउस क्वालिटी के अंडर रहते हैं, कई वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में रहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से है, बट वो रोल वेल्डिंग इंजीनियर का रहता है. ओके. तो नेचुरली ऑडिट तो वेल्डिंग इंजीनियर ही करेगा. ऑडिट तो वेल्डिंग इंजीनियर का ऑडिट वेल्डिंग इंजीनियर ही कर सकता है, दूसरा तो नहीं. क्योंकि नहीं, इसमें ना क्या होता है पुरी साहब, इसमें ना वेल्डिंग में एक एनडीटी एक बहुत बड़ी चीज है, इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं. इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं. जो लेवल 3 होते हैं एनडीटी, जो लेवल 3 जो पर्सनल होते हैं वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड होते हैं. तो उनके वो जैसे हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं या क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं, वहां पे अगर आप वेल्ड लगा रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड करता है कि वो एक वेल्डर ले सकता है, क्योंकि वो क्रिटिकल एप्लीकेशन है तो वो एनडीटी लेवल 3 को जाएगी. तो वो उसका जो साइन होगा ना, जो साइन ऑफ होगा कि हाँ ये मैंने इंस्पेक्ट किया है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो डिफरेंट है रादर देन कि जो वेल्डिंग है और उसी ने ही इंस्पेक्ट किया है. सर इसमें एक क्वेश्चन आता है, अब एनडीटी 1, 2, 3 आपने बोला, व्हाट इज एनडीटी लेवल 1, व्हाट इज देयर क्वालिफिकेशंस, हाउ अ पर्सन बिकम्स एनडीटी 1, हाउ ही बिकम्स एनडीटी 2, हाउ ही बिकम्स एनडीटी 3, ये थोड़ा सा आप हमें गाइड कीजिए. सानू जी बताना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल से पूरी साहब एक पूरा बड़ा चैप्टर है इसमें, लेकिन आप जरा शॉर्ट में मैं बता इसमें क्या है कि जो एनडीटी लेवल 1 होते हैं
उसमें जो बेसिक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, जैसे जैसे डाई पेनिट्रेशन टेस्ट हो Dye गया या penetration, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हो गया, जो बेसिक 3 या 4 टेस्टिंग्स हैं, MPI है, वो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है। हाँ, वो उसने अगर ट्रेनिंग की है, देयर आर वेल नोन ट्रेनिंग है, ये एनडीटी जो करवाते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, बॉम्बे में भी है। मेरे कई फ्रेंड्स ने, इवन मेरी टीममेट्स ने बॉम्बे से करके आए हैं। इनका जो TWI करवाती है इंडिया में। हाँ, इनको TWI भी करवाती है। तो क्या होता है कि इसमें आपका ना जॉब का जो प्रोस्पेक्ट्स है वो बढ़ जाता है। अगर आप वेल्डिंग में बीटेक किए हैं या एमटेक करे हैं या कुछ भी करा है, ये जो आपने एडिशनल जो सर्टिफिकेशन लेवल 1, लेवल 2 लिया है, तो इसमें आपको डिपेंड करता है। जैसे मेरी कंपनी है, अभी अभी मेरी कंपनी में मेरे को एक आदमी है जो बीटेक है और मेरी रिक्वायरमेंट है बीटेक, पर एक बंदे ने बीटेक प्लस लेवल 1 किया है। तो मेरी डे टू डे लाइफ में ना लेवल 1 यूज होता है। मतलब मैं अपनी जो फेलियर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसमें उसमें मेरे पास इक्विपमेंट है, बट अगर कोई आदमी लेवल 1 है और वो उतना ही कॉम्पिटेंस रखता है जो बीटेक वेल्डिंग वाला रखता है, तो मैं डेफिनेटली लेवल 1 और या लेवल 2 वाले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को उसके लिए सब कॉन्ट्रैक्ट को बुलाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं वो मेरा जो बंदा है, अगर वो लेवल 1 या लेवल 2 है, तो वो मेरा सब कॉन्ट्रैक्ट का पैसा बचा रहा है। मैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा कि यार ये आदमी मेरा पैसा बचा रहा है और इसने ये क्वालिफाई भी किया है, तो इसको हायर करूंगा। सर, ये लेवल 1 और 2 और 3 जो है, ये कौन कौन से इंस्टीट्यूट देते हैं? आप एक बार फिर से आराम से रिपीट करिए ताकि बच्चों को पता देखो, चले। मेरे को इतना इतना तो मैं एनडीटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरे को इतना पता है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ये TWI देते हैं, या और भी है आप अथॉरिटीज। अगर बहुत चाहिए सारी डिटेल में अथॉरिटीज तो है, मैं आपको जैसे व्हाट्सएप पे दे दूंगा। दिल्ली में आपकी ये सर दिल्ली में अभी है, हमारे क्लास लैब्स के है, बहुत सारे लैब। 10 स्टूडेंट ने लेवल 2 सर्टिफिकेशन लिया है। अभी एनडीटी में क्लास के 10 स्टूडेंट ने सुपर लेवल 2 सर्टिफिकेशन लिया वेल्डिंग में। गुड 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 गुड। सुपर सुपर। तो ऐसे ही आप देखो, मैं तो ये बोलूंगा कि अंकित, आप लेक्चर के बाद आप जो भी आप नोट डाउन कर लें। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ या सानू जी बोल रहे हैं या पुरी साहब बोल रहे हैं, उसका की पॉइंट्स आप जाके ना शेयर करें। आपका कोई ग्रुप होगा, उसमें शेयर करें कि दिस इज व्हाट आई लर्नड आउट ऑफ माय पार्टिसिपेशन एंड इट विल बी बेनिफिशियल इन द प्लेसमेंट्स। ओके यस सर। ओके। सानू जी, एक पॉइंट और था, एक जी। पॉइंट और क्वेश्चन है इसमें। जैसे आपने एक रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशल प्रोसेसेस के लिए आपने फिक्स की। फर्स्ट लेवल आपने बात की कि एक कोऑर्डिनेटर की बात की। यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोऑर्डिनेटर, welding coordinator who will be actually Correct. handling the process. Correct. So what about the lower level of people which you I'm are just selected? if you allow me to go to next slide, it is coming there. Okay. Okay. So now comes the manpower, because that first slide was about management. That was more like a management portion. Right. Now comes the people who are actually engaged into the processes. So the element in manpower refers to the personnel actually who are involved, like special process coordinator and special process operator. So these are two people. I believe you are wanted to ask about operator who will perform the job. That can be a welder, that can be adhesive bonder, that can be painter, that can be who is operating the phosphating line or painting line. So those are the operators. So we have to clearly define with a qualification that they have this kind of qualification, and they are defined as a coordinators, deputy coordinators, operators, and inspectors. So as Vikram defined, inspectors are normally entity qualified, and entity is a general thing, because if you are entity qualified for visual inspection, for MPI, that is not limited only to the welding. That can be done for the castings. MPI is done for casting. Die penetration test is also done for the castings also. For the painting, visual test is valid for all the process: painting, castings, welding, adhesive, bonding, everything. So now coming to the qualification of these coordinators and the operators, in certain processes there are international standards. Like for welding, there is a clear defined ISO 1585, which defines that what should be the qualification of special process coordinator. They should be normally IWE or IWT. So their qualifications can be obtained within India from Indian Institute of Welding, Kolkata, or any international body can award. So this is available in India also. The welders can be either qualified by the welding engineer. If it's a small organization, they can qualify their welders by their own. Or if the organization cannot afford, they can take the support of IIW Kolkata or TUV, North TUV. So there are a lot of organizations who do this. Then similar process is the adhesive bonding, which is like lamination of two plates, metal plates, plastic plates. We use adhesive.
So there also DIN 670, which is a German standard, which clearly defines the requirement EAE, European Adhesive, engineer, specialist, and bonder. So engineers and specialists are coordinators and deputy coordinators. Like in welding, IWE is a coordinator and IWT can be deputy coordinator. So same way, EASE will be main coordinator, bonding coordinator, and specialist will be deputy coordinator, and bonder will be actually operator like welder. So who will be doing the bonding? For other special process, yeah, please. सर जी ये एक बात बताइए, ये जो IWE, IWT, IWS, इनकी फुल फॉर्म क्या बताई आपने? International Welding Engineer, IWE, IWT, International Welding Technologist, IWS, International Welding Specialist, then welder, and then the operators. ये बताइए कि ये जो है सर्टिफिकेशंस, ये इंडिया में कहाँ से होते हैं? इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्डिंग कलकत्ता करवाता है इनका। अंकित, मेरा जो 10 साल का एक्सपीरियंस है मिडिल ईस्ट में, वो ये है कि अगर आप इनमें से एक दो सर्टिफिकेशंस भी आपने, वो जो IIM जो कलकत्ता जो सानू जी बोल रहे हैं, IIW, वेल्डिंग, तो वो अगर आपका जो बीटेक के साथ कैसे इसको सर्टिफिकेशंस को किया जा सकता है, तो आपका मिडिल ईस्ट में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिजनेस है, अभी पूरा फैल रहा है, तो आपका यहाँ पे स्कोप सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, आपका कहीं भी ये स्कोप बढ़ सकता है। आपकी ये एड ऑन सर्टिफिकेशंस विल फ्लेवर आउट योर डिग्री and it will show if you are a really passionate and you are not faking your passion, then you should show up your passion that yes, I have done these additional certifications. It will loud and clear speak up that you are passionate and you have done this additional and you are ready to induct in the industry. Additionally, this certification will open your market for Europe also, because these are originally EN certifications, and European companies do not accept any welding engineers who doesn't have these qualifications. So this opens the European market for also. मैं एक जॉब प्रोफाइल पढ़ रहा था यहाँ पे, तो वहाँ पे IWE, IWT लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, तो मैंने इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट किया. So there are other special processes like painting, where India में कोई standard defined नहीं है उसके process के लिए, but yes, France में है, which will subsequently come to India also. So there, where there the international national standards are not there, so normal organizations can develop their own standards, or sometimes customers give their standards. Like if you talk about automotive, Maruti has their own standards. Maruti gives their standards to their suppliers to follow those. Sanuj, like just a minute, I want to ask one more question here. Like as you're talking about the different standards, which are international standards, and maybe some big companies are having their own standards, like Maruti Suzuki is one of them, or maybe Hyundai is another one, or maybe Tata's are the third one. Is it possible to study those standard procedures and processes or standards for the students so that they can learn about these standards before going these to standards? These standards will not be available in the open market because they are specifically given to their suppliers only. But yes, but they are developed out of ISOs or IS or DIN. They are developed out of that only, or just Japanese standards. So if you go, it's better to read out ISOs, because all everything extract out from there. So because they bring it out. ISO is one of the thing which you should study. Yes. So because मैं इस सेशन को इसीलिए कर रहा था क्योंकि जनरल हम जब इंजीनियरिंग करते हैं प्रोसेसेस पढ़ा दी जाते हैं, लेकिन अब जैसे हमने वेल्डिंग पढ़ी, हमने कभी स्पेशल प्रोसेस के तौर पे उसको नहीं पढ़ाया गया, कभी किसी ने बताया नहीं, मतलब कई साल हमने इंडस्ट्री में पास आउट कर लिया, उसके बाद भी नहीं पता लगा. और दूसरा क्या, इंडस्ट्री जनरली ड्रिवन है ऑटोमोटिव से, जहाँ वेल्डिंग की शीट थिकनेस जो है ज्यादा स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, मिग हो रही है, पर शीट थिकनेस कहीं 0.8 है, 1.2 है, 2 mm है, जबकि वेल्डिंग रोल प्ले करती है अपना जब प्लेट्स की बात करते हैं, जब इंचों में बात करते हैं. सो और तब तक मतलब समझ नहीं आती है कि क्या चीज है. सो इसलिए ISO जो वेल्डिंग के स्टूडेंट्स हैं, ISO 15085 मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो आप बात कर सकते हैं. आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल है, PDF पे मिल जाएगा. PDF पे मिल जाएगा, बट ये बाय करने पड़ते हैं अगर जेन्युइन कॉपी चाहिए आपको, बट लाइब्रेरीज में होंगी मेरे हिसाब से. दूसरी जो नई फील्ड है विच इज रिप्लेसिंग नाउ वेल्डिंग इज बॉन्डिंग, क्योंकि वेल्डिंग मेटलर्जी को चेंज कर देती है बेस मेटल पे, बॉन्डिंग चेंज नहीं करती है. सो अभी देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर वेल्डिंग इज बीइंग अवॉइडेड.
सो क्योंकि मेटलर्जी में जो स्पेशल मेटल्स हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील्स हैं, हाई कार्बन स्टील्स को वेल्ड करना बहुत मुश्किल है. सो पाउडर मेटलर्जी को हाई कार्बन स्टील से वेल्ड करना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. यू विल गेट क्रैक्स एंड क्रैक्स. Well, I personally have one experience of this. So there, it is better to have adhesives. You can have various adhesives which has an equivalent strength which you can get from welding. They give I equivalent strength. actually, Sanuji, this is a very good suggestion. You have only one experience. On a monthly basis, I am getting many experience because we do metallurgical failure investigations. So all the case studies of failure comes to our lab. So almost 8 to 10, investigation case studies come every month. We do 8 to 10. And last month I was doing where the carbon equivalent was more than 0.7. So that high carbon more than 0.7, Points. very tough to weld. And even with the proper post weld heat treatment and preheating, this is really next to impossible. And because as you rightly said, heat is involved, it will change the metallurgy, it will cause heat treatment, heat affected zones where the cracks are, Cracks will we can't open. avoid those cracks. Yes. So I think this adhesive bonding is something which is very good. Even I can suggest as a recommendation in my case studies. Thank you. So I was knowing it, but this is the kind of understanding. It is now I am getting more confident to suggest to my clients that yes, why don't you go for adhesive bonding if the strength and everything permits. yes. Sanurji, this adhesive bonding which you're talking about, the adhesives, is it basically end of the day a chemical thing? Yes, chemicals. Okay. Chemicals, purely chemicals. So basically, it is a chemical engineering background. It is chemical engineering. It is chemical. End of the So day, that's why- which is that's why- connected with the welding and Correct. joint engineering. With See, basically, it is a joining process. It's a You joining are process. It's a joining joining two process. things. It's a joining Basically, you are joining either you are joining through welding, either heat and input of electrode, because that, as rightly Sanu said, it will change the metallurgy of the Right. joint. And that when the metallurgy changes, many things can happen. Corrosion can happen, cracking can happen, hydrogen delayed cracking can happen. Delayed Correct. cracking means you seems that you did the welding well, but maybe And after it- 24 hours 48 or hours, 24 hours. after 48 crack hours, the opens. cracking starts. Crack. And that Okay. cracking comes under material science we were discussing before this. Atomic hydrogen goes into the material and वहाँ पे वो ऐसा Cracks Entanglement करता है. develop कर देता Correct. है. तो ये सारी चीजों को आप सिरे से ही अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बॉन्डिंग की तरफ जाएं और अच्छा, थोड़ा एक देखें चीज कि आप कैसे एडिसिव बॉन्डिंग को एडिसिव बॉन्डिंग की वायबिलिटी भी देखनी पड़ेगी. आपको ये भी देखने पड़ेगा कि वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, सर्विस में कितना लोड आ रहा है, क्या वो लोड ले सकता है और सब कुछ है, रिलायबल है. तो ऑलवेज गो फॉर एडिसिव बॉन्डिंग. एक चीज और बताइए कि जो एडिसिव बॉन्ड्स है, द टाइप ऑफ एडिसिव बॉन्ड्स अवेलेबल, हाउ मेनी टाइप्स आर अवेलेबल, या कौन कौन सी कंपनीज के अवेलेबल है, और उन कंपनीज के जो वो बॉन्ड्स सानू जी अवेलेबल बता है सकते हैं. सानू जी. उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हम इन लोगों को स्टडी करनी चाहिए क्या? पूरी साहब, मैं उस पे एक प्रेजेंटेशन बना के एक नया सेशन रखेंगे पूरा, बिकॉज दैट्स अ प्योर एंड डिफरेंट टॉपिक. विल कीप इट. बट यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बीच में क्वेश्चन था कि वेल्डिंग इंजीनियर का डिजाइन में क्या रोल है. अगर वो जो ये एक एग्जांपल मेरे पास है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, एक पाउडर मेटलर्जी का पार्ट है विच आल्सो इज आल्सो हाई कार्बन गियर है, वो उसके साथ हमें एक शाफ्ट वेल्ड करनी है, C45 है, कार्बन इक्विवेलेंट एज विक्रम मेंशन्ड इज मोर देन 0.7. डिजाइनर ने उस पर वेल्डिंग जॉइंट दे दिया, बिकॉज जो भी डिजाइन वो हुआ वहाँ पे कोई वेल्डिंग इंजीनियर उस ऑर्गेनाइजेशन में था ही नहीं. उसने देखा ही नहीं कि पाउडर मेटलर्जी को इतने हाई कार्बन कंटेंट के साथ वेल्ड कैसे करना है. दैट हैज बिकम अ पेन नाउ. अगर वो वेल्डिंग इंजीनियर होता, उसके पास रेफरेंस के लिए गया होता, रिव्यू के लिए ड्राइंग गई होती, वो उसको रोक देता. सेम प्रॉब्लम इसी जॉइंट में एक और है कि ग्रूव जितना उसकी वेल्ड मांगा है तो उतने के लिए उसमें जॉइंट प्रिपरेशन उसने एक डिटेल दे दी है जॉइंट प्रिपरेशन की 60 डिग्री उस एग्जांपल के तौर पे. उस 60 डिग्री से आप अचीव ही नहीं कर पा रहे उसको, तो वो वेल्ड डिटेल्स उसको देनी नहीं थी. वो अगर वो वेल्डिंग इंजीनियर होता तो उसको मॉडिफाई करवा देता. तो यहाँ वेल्डिंग इंजीनियर का रोल आता है, या वो कहता है ये वेल्डिंग का पार्ट है ही नहीं, इसको वेल्ड नहीं किया जा सकता. So should we proceed? So all the special processes, I mean, you mean to say all the special processes, not only welding, any special processes has Correct. to go to the special process Special engineers process. only, so that Yes. they can understand whether this is Correct, feasible or not. Correct. Like bonding And then- also. And bonding yes. also. And the bonding. Like bonding में आपने एक डिजाइन बनाया which is suitable. आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में
लेट अस एग्जांपल के तौर पे डिजाइन हुआ जो यूरोप में डिजाइन हुआ, डिजाइनर यूरोपियन एनवायरनमेंट कंसीडर करते हुए सिलेक्शन ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल कर लिया, हाँ, ठंड लेकिन वहाँ वो ज्यादा है सब। इंडिया में तो टेम्परेचर सूट ही नहीं करते, ठीक है। वो बॉन्डिंग एजेंट ने फेल होना ही होना है, या तो उसका कोहेसिव फेलियर हो जाएगा या एडेसिव फेलियर हो जाएगा। सो अगर वो वेल्डिंग कोऑर्डिनेटर सॉरी बॉन्डिंग कोऑर्डिनेटर को उसने दिखाया होता और ये बताता कि बॉन्डिंग कोऑर्डिनेटर पूछेगा कि कहाँ जा रहा है डिजाइन पे, इंडिया जा रहा है, मिडिल ईस्ट जा रहा है, सो आगे मैं आऊंगा उस पर कि मदर एनवायरनमेंट टेम्परेचर क्या है, उसके हिसाब से केमिकल चेंज करने पड़ते हैं उनको। सो ये स्पेशल प्रोसेस कोऑर्डिनेटर्स का रोल है उसमें। एक चीज और बताइए, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा छोटा सा कि ये जो जी। आपने सर बॉन्डिंग एज आई थिंक एडहेसिव बॉन्डिंग में आवाज नहीं आ रही थी। जो आपने बॉन्डिंग कोऑर्डिनेटर की बात की थी, बॉन्डिंग कोऑर्डिनेटर बनने के लिए भी कोई स्पेशल कोर्स करना पड़ता हाँ, है या स्पेशल कोर्स हैं, स्पेशल कोर्सेज हैं, यूरोपियन एडेसिव इंजीनियर का है, अभी आईएसओ का स्टेटस नहीं मिला है इसको, क्योंकि मेनली इसमें यूरोपियन कंपनीज हैं। अगर इसमें आप बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन है आपकी सबसे ज्यादा रेलवे इंडस्ट्री में, शिप बिल्डिंग में, आपकी जो स्पीड बोट्स हैं जितनी वो बॉन्डिंग से एडेसिव बॉन्डिंग से बनती हैं, आपकी सर्फिंग बोट्स हैं जो आपका ट्रेन के जो डोर लीफ्स हैं, ट्रेन के जो पैनल्स हैं, बॉडी है, वो सारी बॉन्डिंग से बनती है। सो तो गाइस दिस इज वन मोर थिंग व्हिच एरोस्पेस इज में भी होगा इसका रोल, एरोस्पेस में भी होगा, एरोस्पेस बहुत में भी बड़ा, होगा। एरोस्पेस सबसे इम्पोर्टेंट है, एरोस्पेस है, रेलवे इंडस्ट्री है, अभी तो कार में भी आ गया, ऑडी ने अपनी कुछ मॉडल्स में वेल्डिंग को रिप्लेस करा है बॉन्डिंग के साथ। oh so guys see this bonding is something very important which is going to come up in a big way in the coming days, so you guys can take on certifications in this particular segment as well. अभी इंडिया में इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट आई बिलीव इन नेक्स्ट 1 ईयर इट विल बी अवेलेबल। मुंबई में या पुणे में वो अपना खोल रहे हैं, अभी यूरोप में ही अवेलेबल है, चाइना में अवेलेबल है, GSI SLV करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, TUV भी करवाती है, लेकिन इंडिया में नहीं है अभी अवेलेबल। सो बट जिसको इंटरेस्ट हो मेरे से 1:1 कनेक्ट कर सकता है इस पे। Yes. चलिए आगे बढ़िए। I think a lot of knowledge is pouring in, guys. Yes, yes, I would request everybody, whosoever is watching, to ask your friends to join immediately, because two stalwarts are opening up like anything, and there is a rain of knowledge today in this particular domain. Yes, sir. So then come the machines. The machine is the equipment which will be used to perform the special process, be it welding, be it phosphating, be it bonding, casting, forging, whatever we call. So if we stay to the example, let us say welding. So welding, your welding power source, your gun, your wire feeder, whatever you come. So that has an impact on the performance of the process. So calibration, validations of this equipment is a must. And then the selection of this equipment is very important. And where the normally people don't understand, as Vikram also mentioned, because in India it is still a very raw industry which is growing now. And a lot of, I know personally, a lot of people who are passed out of Longwall are into this business, or they're growing very high. वेल्डिंग सेट का सिलेक्शन खुद में एक बहुत बड़ा रोल है, आप उसका ड्यूटी साइकिल क्या रखने वाले हो, करंट टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए उसकी। सो ऑल दिस इक्विपमेंट, आपको कोल्ड वायर फीड करनी है, हॉट वायर फीड करनी है, वो नॉर्मल आदमी नहीं चूज कर सकता जब तक उसको मेटलर्जी या वेल्डिंग के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक लेवल नहीं पता। सो मशीन सिलेक्शन, मशीन मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्पेशल प्रोसेस। लाइक आपका सरफेस ट्रीटमेंट है, आपके जो एग्जांपल के तौर पे फॉस्फेटिंग लाइन लीजिए, तो आपका जो ट्रांसपोर्टर चल रहा है या क्रेन जो चल रही है, उसकी स्पीड, उसका कंट्रोल्स, सो दोस ऑल आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो देन देयर हैंडलिंग कैपेसिटी, एर्गोनॉमिक्स एज विक्रम आल्सो मेंशन्ड कि एर्गोनॉमिक्स, क्या वेल्डर वहां घुस के वेल्डिंग कर भी पाएगा, पता लगा सांस ही ना ले पाए अंदर जाके, इतनी टॉक्सिक गैसेस निकल रही हैं। HSC, हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट एस्पेक्ट शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द वैलिडेशन। हमने मशीन खरीद ली, कोई टैकल बना लिया, कोई फिक्सचर कर लिया, लेकिन फ्यूम्स उठ रही हैं, इतने कन्फाइंड जोन है, सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स हैज टू बी टेकन केयर। सो दिस इज रिलेटेड टू मशीन्स। सो मशीन्स के केस में भी आप थोड़ा सा और इनपुट दीजिए रिगार्डिंग व्हाट स्टूडेंट्स कैन स्टडी और फ्रेशर्स कैन स्टडी, और एज ए तो आपने थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल टॉपिक भी खोल दिया कि भाई आप मशीन बना भी सकते हो और बेच भी सकते हो। हाँ बिल्कुल, अभी है भी है इसमें। अगर मेरे हिसाब से हमारे जूनियर है दीपांशु, आई डोंट नो वेदर ही इज अवेलेबल हियर और नॉट, वो फ्रोनियस में है, व्हिच इज अ वेरी गुड वेल्डिंग इक्विपमेंट सप्लायर। सो दे हैव अ वेरी गुड लैब इन गुड़गांव, सो जहाँ पे वो ट्रायल्स वगैरह कस्टमर्स के लिए करते हैं। एंड
So you can Then contact सर our अभी Arjun, हमने हॉट वाइटिंग Arjun, मशीन it मंगाया was one कॉलेज में और ये presentation. सही Yeah. मंगाया है What, hello. Amit? Yeah, Ankit, what? अंकित अभी हॉट वाइटिंग मशीन आई है सर कॉलेज में वो 4 years से ही आई है हॉट वाइटिंग मशीन ओके 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 सो जैसे फ्लोनियस का है, आप उसका लिटरेचर या आप दीपांशु से कनेक्ट करके इफ यू कैन ऑर्गेनाइज अ विजिट Yes, visit की बात कर रहा था मैं, वही बात तो करने वाला था. तो आई डोंट नो if if Dipko is you guys available or can not. visit these factories, even Sanuj's factory or this factory, so that you can actually get an input कि what exactly is happening and how it can be done. पुरी साहब, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा. जैसे ये हम स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं वेल्डिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो जैसे आप ग्रेजुएशन मैकेनिकल में करते हैं और वेल्डिंग आपकी स्पेशलाइजेशन है, then you basically, my suggestion is to all the students, who are in final year or just passed out, just try to identify your passion. Sometimes the person is doing a engineering in general, mechanical engineering, and during that course of 4 years, 5 years, if including diploma, so they find themselves more inclined towards the mechanical engineering, core mechanical, like talking. They feel more like they are talking better to gears, shafts, these kind of things, fasteners. But during the course of last 2 years, when they are doing specialization in welding, they find suddenly that their passion is more towards heat treatment, iron carbon diagram, or metallurgy, or welding metallurgy. So they need to identify if they feel they are more connected to the core mechanical, and they are, if or they are more connected to the metallurgy. If they are connected to core metallurgy, then go deeper into these welding machines, because there is a huge market who is making and selling these machines. They need, then of course, if, their shop floor is full of general mechanical engineer from other engineering colleges. But if they will find that we are making welding machines, but there are specialized engineers who are mechanical engineer plus welding engineer, they will definitely prefer them, because their welding, flavor will help their shop floor to make better machines, or even the selling of machines. Who can sell the machines in the exhibitions? Tell me. Only a mechanical engineer, or a mechanical engineer plus welding engineer? The plus welding Yes, welding engineer engineer. Yes, will definitely have an edge on selling the machines. So you can all together see, if your personality is more expressive, more communicative, you can become a sales stalwart. You can start your, everybody cannot become an engineer. People are, without selling the things, engineers are nothing. They will keep producing the things, unless you need a person who has a skill of selling. So you can also choose to go into the sales business. You can do the MBA and specialization, and understand how you need to sell the business with the flavor of your communication. So it is not, mental block should not be, oh, I am an engineer, now I have to look out some job in the shop floor. No, that is not the thing. You have to look up the job what you can sell best. You can sell your metallurgy knowledge, you do in metallurgy. You can sell the machines, you go in machines. You can sell the consumables, go. You can make better designs, joint designs, as Sanu just said. Then you can go into, you can explore more into the joint welding design and all that. This is what And maybe this is you what do the master's degree in welding design and then go further. तो रिसेंटली आई मेट अ पर्सन, और मैं अभी तक कभी हमने भी नहीं सोचा था ऐसे. जनरली हम लोग जो वेल्डिंग इंजीनियर्स हैं, पास आउट होकर के शॉप फ्लोर में जाने के लिए या जो आपकी लेबोरेटरीज हैं उसको ढूंढ रहे होते हैं. Yes. आई रिसेंटली मेट अ पर्सन हु इज वर्किंग एज ए डिजाइनर. सो अगर आप वेल्डिंग इंजीनियर हो, साथ में कोई 3D सॉफ्टवेयर सीखिए एंड ट्राई टू ज्वाइन इन द डिजाइन डिपार्टमेंट. बिकॉज जो बड़ी ग्रोइंग मार्केट बन रहा है रेलवे इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली शिप बिल्डिंग के लिए, एरोनॉटिकल के लिए, और वो ऑर्गेनाइजेशंस डिज़ाइन, जो आप कह रहे हैं डिज़ाइनर में वेल्डिंग इंजीनियर का क्या रोल है, वो वेल्डिंग इंजीनियर के साथ अगर उसके, क्योंकि जो फ्रेशर पास आउट हुआ वो एक फ्रेशर है, तो आप वेल्डिंग इंजीनियरिंग के साथ जो लोग शॉप फ्लोर पे नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुत लोग शॉप फ्लोर पे जाने की वजह से बेसिक ट्रेड छोड़ देते हैं, वो कोई 3D कोर्स कीजिए, सॉफ्टवेयर कोर्स कीजिए, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, FA एनालिसिस का, या सॉलिड वर्क्स, प्रो, वट एवर यू लाइक. Then you look for a design job in mechanical industry. Like
बोगी डिजाइनिंग है, शिप बिल्डिंग है. So these are also jobs which people don't explore, especially mechanical engineers. वो Yes, सोचते हैं yes. जनरल मैकेनिकल इंजीनियर ही डिजाइन कर सकता है, वेल्डिंग इंजीनियर तो वेल्डिंग करने के लिए. इट इज रॉन्ग. Exactly. Now, सो वो वो पुराना वो कंसेप्ट है सानुज जी, उस वो फील्ड पुराना को हमने कभी कंसेप्ट. करेक्ट, हमने आज तक उस फील्ड में सोचा ही नहीं था. सर आई वुड लाइक टू ऐड हियर, आप लोग अभी जो बात कर रहे हो वो थोड़ा सा हट के बात कर रहे हो और डिफरेंट बात कर रहे हो. मैं एक बात आपको बताता हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी भी स्पेशलाइजेशन में सबसे ज्यादा जॉब सेल्स में होती है, पहली बात, और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी सेल्स में होती है. दूसरी बात, तीसरी बात, अगर आपको बनाना भी आता है और सेल्स भी करना आता है, फिर आप जॉब मत कीजिए. नहीं, ये एक एक्सप्लोर है सर, ये नहीं, I'm बिजनेस just करना telling है you, तो I'm just telling Correct, you, वो माइंडसेट because होना see, चाहिए. हर see, किसी का पूरी साहब वो माइंडसेट नहीं होता. नहीं, हमें हर किसी को, मेरी ये स्टेटमेंट हर किसी के लिए है भी नहीं. हाँ जी, हाँ जी. कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जो ये सोचते होंगे मेरी तरह कि भाई नहीं, अभी अपने, मैं क्यों किसी को डिसाइड करने दूं कि मेरी सैलरी क्या होगी. मैंने यही सोचा था पहले दिन, मैंने क्यों मैं जॉब में नहीं गया, क्योंकि मैंने ये सोचा कि मैं किसी को डिसाइड करने क्यों दूं कि मेरी सैलरी क्या होगी, चाहे वो कम हो चाहे ज्यादा हो. मेरी इंक्रीमेंट अगले साल कितनी होगी, मैं किसी और बंदा, कोई और मेरी डिसाइड क्यों करे. I have got the capability to decide myself. That's what you have to understand, guys. So I'll tell you one thing, ठीक है, वो क्योंकि जॉब्स में जाना, ये सब स्टडी करके नए नए आइडियाज लेके अंदर घुसना, ये थोड़ा कंफर्ट है. हमें लगता है कि ये कंफर्ट है और हमें लगता है जॉब मिल जाएगी, हर महीने सैलरी आएगी और एक सिस्टम बनने लगेगा. बट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, द डे यू विल कम आउट ऑफ दिस कंफर्ट कि नहीं भी हर महीने मुझे कमाना ही पड़ेगा, और एक्चुअली आप हर महीने कमाते ही हो. अगर नहीं कमाते हो तो आपको कंपनी भगा देती है. एक्चुअली कमा रहे हो आप. So I would request Ankit and team, your people, that the lowest risk in starting a business is when you are just coming out of a college. Lowest risk is at that time. जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे रिस्क बढ़ता जाएगा. आप जो बिजनेस में घुसने के लिए आपका रिस्क बढ़ता जाएगा. ऐसा नहीं कह रहा कि कोई लोग आए नहीं, आते हैं लोग, और बिल्कुल 60 के बाद भी लोगों ने बिजनेस किए और बड़े बड़े किए, लेकिन रिस्क बढ़ता जाएगा. लोएस्ट एज में रिस्क सबसे कम होता है, क्योंकि लर्निंग स्टेज भी ज्यादा होती है, आपके अंदर कंप्रोमाइज करने की पोजीशन भी होती है, अडेप्टेबिलिटी भी आपकी ज्यादा होती है, आप कुछ भी कर सकते हो. तो दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि जिस तरह की ऑप्शंस सनुज गोयल और विक्रम नंदा ने खोली हैं, मतलब जिस तरह से इन्होंने बात की आज की डेट में, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लिसनिंग टू अ लेक्चर व्हिच इज बियॉन्ड द टेक्निकल थिंग्स, एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी डिफरेंट. We are talking about sales, we are talking about manufacturing, we are talking about specializations, and this is required in every field, guys. If you want to sell something, you have to learn about that. Yes. And you are already learning about it, and you know the things. And if you know how to sell, you just make it and sell it. और मैं और कहता हूँ, अगर आप मेकिंग भी नहीं करना, आप ट्रेडिंग करके बेच लीजिए. आप किसी के लिए नहीं, अपने लिए बेचिए. सामने वाले फैक्ट्री वाले के पास जाओ, कहीं तेरी मशीन है, मैं बेचूंगा, ले पकड़ा, मेरी ये कंपनी है, मुझे सेल कर, मैं करता हूँ. मैं यहाँ पे पूरी साहब मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा. जैसे एक 60 बच्चों की क्लास है, ठीक है, 60 बच्चों की क्लास है, और सपोज हम तीनों, पूरी साहब, आप, सानुज और मैं, हम लोग लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है. अब उस 60 बच्चों में अगर सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, या समझो सिर्फ पूरी साहब लेक्चर दे के निकल जाएंगे, तो क्या होगा कि उसमें जो 15-16 जो माइंड्स हैं, जो बिजनेस की तरफ इंक्लाइन तो थे, बट वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, तो वो भी एट द एंड ऑफ डे शॉप फ्लोर जॉब ही करेंगे. क्योंकि आपको आपके ना, जब आपका माइंड राइप था, तब उसको किसी ने तोड़ा नहीं. तो वो चीज है. तो जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म में बैठे हैं जहां पे पुरी साहब है, ही इज रनिंग अ बिजनेस, यू नो, ही इज अ टेक्नोक्रेट, जहां पे सानुज जी हैं, ही इज एक्चुअली इनटू द बिजनेस, कोर बिजनेस, राइट. ही इज लेटिंग अस नो कि कौन सी डिग्री है, कौन से सर्टिफिकेशंस करोगे, कहां जाके आपको क्या फ्लेवर मिलेगा. और मैं हूं जहां पे मैं एक कंपनी में टेस्टिंग एजेंसी में काम कर रहा हूं, और ये सारी चीजों को यूज कर रहा हूं. मेरी डे टू डे में मैं सानुज जो बता रहे हैं, मैं वो भी यूज कर रहा हूं. मैं कोर वेल्डिंग और मेटलर्जी भी यूज कर रहा हूं. और जो बिजनेस का है, मेरा प्रिंसिपल इंजीनियर है, मेरा वन ऑफ द कोर जॉब है अपने बिजनेस को सेल करना. तो पॉइंट ये है कि आप एक 60 बच्चों की क्लास को लेक्चर दे रहे हो, तो उसको डिफरेंट फ्लेवर माइंडसेट में, डिफरेंट टॉपिक्स में आप लेक्चर दो. जो 15 बच्चे कोर में जाना चाहेंगे, क्योंकि वो सिटिंग ऑन द एज ऑफ कोर, वो वहां पे चले जाएंगे. जो लिविंग ऑन द एज ऑफ बिजनेस, वो वहां पे चले जाएंगे.
और और जो सर लिविंग नंदा ऑन साहब द इसमें एक पॉइंट और है, अभी जैसे इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात हो रही है, अभी हम इंक्यूबेशन सेंटर पे बात कर रहे हैं, वी वांट यस दिस यस इंक्यूबेशन सेंटर टू बी ओपनड अप इन स्लाइड आल्सो. What we are trying to say is there is a possibility that one person is having a very strong mindset for business, let us say. There is one more guy who is very technically sound. Both can combine together and make a एग्जैक्टली company. This is what has कोलैबोरेट happened in USA. This is what is happening एग्जैक्टली in Europe, but it is एग्जैक्टली not happening in India. Now it has just started. But we यस यस want this to happen in our institution as well. यस 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 अगर दो एक ही क्लासमेट में आप दो डिफरेंट माइंड्स को कोलैबोरेट करके आप और वो ग्रोथ स्टार्टअप आएगी, इनिशिएट कर वो सकते हो ग्रोथ यस आएगी. एक बंदा यस प्रोडक्ट्स का स्पेशलिस्ट हो, एक बंदा सेल्स का स्पेशलिस्ट हो और एक बंदा बिजनेस मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट हो, तीन लोग अगर मिल जाते हैं तो दे कैन क्रिएट वंडर्स. डेफिनेटली डेफिनेटली और जितना भी रेवेन्यू आएगा तीन लोगों में करो और कौन सैलरी डिसाइड कर रहा है कौन क्या कर रहा है एज राइटली सेड वो तो खुद यू आर डिसाइड करो. डिसाइडिंग योर सैलरी जितना यस, काम करोगे उतनी सैलरी बढ़ेगी जितना काम नहीं करोगे उतनी घटेगी तो यस. यू आर द ओनली सोल यू आर नॉट ओनली पर्सन डिसाइडिंग योर सैलरी, यू आर डिसाइडिंग a lot of number of people's salaries. एग्जैक्टली 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 गुड So, Yes, Sanuj ji. Yeah, okay. sorry, we have So next, taken no, the no, no, no. discussion to some other It's, side. it's okay. This is also important topic. Yeah. So next is method. Another one. So method is how the process will be performed. So it has to be well defined for all the processes, but for the special processes there are some additional requirements. So that means in general, if you talk about any process, so process sheets or their standard operating procedures are created. But for the special process, there are special documents are to be created. Say name for the welding. For the welding, you have to create PWPS, which you might have read, then WPS, WPQR, welder qualifications, further reports, all this stuff. Similarly, for all the other processes also, like if you talk about painting, you have to create a data for the how will the material preparation done, what will be the cleaning method, how the tag ragging will be done, what should be the temperature. So all this should be there. How the paint mixing will be done, what will be the viscosity of the paint. So all these kinds of parameters to be described in the instructions which are for the method. So it should definitely have how the metal preparation is done, like for the welding, how the joint preparation or etc. How should be the cleaning, execution sequence, if there is a multi-run or multi joints on a single job, which run to done first and which run weld to be. So basically weld sequence, same way. सर इट इज जस्ट लाइक WPS. जैसे WPS होता है वेल्डिंग के लिए, वैसे ही मेथड्स आ रहे हैं नॉर्मल प्रोसेसेस के लिए. No, this are not. Welding is also special, but that is what I wanted to clarify. Most of the people, when they pass out, they consider welding only a special product. That is not limited to welding. So, क्योंकि सिर्फ ज्यादातर इंडस्ट्री में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने इसको इतना पॉपुलर किया कि लोगों की नॉलेज में सिर्फ वेल्डिंग ही स्पेशल प्रोसेस रह गया, विच इज नॉट करेक्ट. क्योंकि आपको WPS में भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती, आपको वेल्ड सीक्वेंस प्लान अलग से बनाना पड़ता है. एक बहुत बड़ी अगर जॉब है जिसपे 50 वेल्ड होने हैं, तो कौन सा वेल्ड पहले करना है डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए, दूसरा वेल्ड कब करना है. सो इस टाइप के लिए वेल्ड मैप बनाना पड़ेगा, वेल्ड सीक्वेंस बनानी पड़ेगी. सेम वे ही आपको अगर पेंटिंग का एग्जांपल लें या फॉस्फेटिंग का एग्जांपल लें, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको जॉब को किस तरह से हैंग करना है कि उसमें वाटर एंट्रैप ना रह जाए, केमिकल एंट्रैप ना रह जाए, जो कि बाद में कोरोजन को इनिशिएट करेंगे. सो दिस इज फॉर ऑल काइंड ऑफ स्पेशल प्रोसेसेस. इट इज नॉट लिमिटेड टू वेल्डिंग. तो उसके बाद जब प्रोडक्ट बन गया उसको प्रिजर्व कैसे करना है. सो अगर आपने फॉस्फेट कर चुके हो, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, उसको फॉस्फेटिंग और पेंटिंग के बीच में आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते. दैट जॉब विल बी डिस्ट्रॉयड. Painting will not be proper. So how the preservation has to be done. So the same is for the welding also, between one pass and another pass. It can be for the adhesive bonding also. So there it has to be well defined how it has to be done, in which sequence has to be done. तो बेसिकली जो सानू जी जो अंकित पूछ रहा है मेरे ख्याल से कि जैसे वेल्डिंग में PQR WPS वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स इनमें भी स्पेशल बिल्कुल स्पेशल, बिल्कुल सिमिलर वे में. अगर एडहेसिव की बात करें तो सिमिलर टू WPS आपको बॉन्डर क्वालिफिकेशन बनाना पड़ता है. आप सॉरी वेल्डर क्वालिफिकेशन की तरह बॉन्डर क्वालिफिकेशन करनी पड़ती है. WPS की तरह आपको एडहेसिव का प्रोसेस शीट बनानी पड़ती है, so which is approved by the special process coordinator. Same is applicable for painting also. The names are different, but there are definitely the documents has to be there in a specific format. That's what he was asking. Yes. Yeah.
So all the critical instructions or parameters should be traceable. So traceability is a very important point in special processes. So all the affected, so that if there is any issue later on found out, so the products can be identified in case of any non-conformity. So traceability is a key point here in the special process when the method is being followed. If we are following a method but we are not keeping traceability, then we cannot find out what happened when. Can you Especially if explain a the bit more failure, about traceability? especially if the actually in my day-to-day life, when we do the failure investigations, we tell that if I find during my investigation that consumable used wrongly, then I asked my client, go and check which consumable you have Yes. used, what is the traceability, what is the batch number and everything, and just make sure you blindfold that batch, because it is a wrong batch of electrode or something. So that So that is very important, traceability, right? traceability. So you should have traceability of man who has done it, Okay. which material was used, which batch of base metal was used. If there is any issue, you can track back how many parts are produced from that particular batch. आपका environment control जहाँ पे जैसे adhesive bonding से time पे you have, which will come further in next slides. So traceability is a very important rule. मैं इसमें So in a सानू way, जी एक tracking ऐड करना almost चाहूंगा। every पुरी साहब मैं tracking एक almost बड़ा every parameter, right? पुरी साहब, सानू जी मैं इसमें एक ऐसी चीज ऐड करना चाहूंगा जो जी मेरे एक्सपीरियंस में हुई थी और जो बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था। यहाँ पे एक प्लांट है, ऑयल एंड गैस का जो प्लांट होता है, उसमें बहुत सारी फिटिंग्स, एल्बोज और फ्लैंजेस लगे होते हैं, राइट? मे बी जी जी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स पूरी प्लम्बिंग पाइपिंग लगी होती है। तो उसमें correct. क्या हुआ Yes, कि sir. देयर वाज सम लीक इन द एल्बो। सो वो एल्बो लीक हुआ, वो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आया, और वो एल्बो में जब हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो वो इतना सा एल्बो था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था उसमें, मतलब इट वाज हीट ट्रीटमेंट इशू। तो क्या हुआ, हमने बोला कि भाई आप हीट ट्रीटमेंट इशू है तो जो भी हीट का आपने बैच है वो ट्रेस करके, और जितने भी इस हीट के आपने लगाए हैं वो सारे निकाल दो। अब वहां पे क्या हुआ, ट्रेसेबिलिटी है नहीं। तो क्लाइंट बोलता है भाई इसके तो 5-6 हजार लगे हुए हैं और देर इज नो ट्रेसेबिलिटी। मैंने कहा यार ऐसे इतना बड़ा प्लांट खड़ा कर दिया, ट्रेसेबिलिटी नहीं है, मतलब ये तो सीरियस ऑफेंस है, मतलब बेसिकली। तो दे बिल्कुल से नो, दे वेंट बैक एंड दे कम बैक टू मी आफ्टर 2-3 months। तो मैंने ये बोले कि ये ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो मैं कहा पूरा प्लांट ही स्टेक पे है, पता नहीं कब कौन सा लीक कर जाए, कौन सा कहाँ लिखा लगाया आपने, कौन सा क्या किया है, कुछ ट्रेसेबिलिटी। तो क्या हुआ, उन्होंने उनको और कई लाखों रुपया खर्चा करके सारे एल्बो साइट पे टेस्ट करने पड़े। साइट पे लगे हुए एल्बो ऑलरेडी, तो हम साइट टेस्टिंग करते हैं, तो सबकी साइट में से मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर लेके उनको ओके नॉट ओके, जो नॉट ओके है उसको निकाला। तो मतलब एक ट्रेसेबिलिटी ना होने की वजह से लाखों करोड़ रुपया उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट बिल्कुल करना पड़ा टू मेक श्योर कि traceability हम is उसको very important. निकाल लें वहां से। So in a way, Traceability सबसे key all factor the है. parameters should be tracked when the thing is यस happening. यस, You know? लॉग बुक होता है, not only लॉग बुक not होता only है। parameters, not in all the Okay. parameters. The person who has done this job, Okay. the All the base metal, stakeholders. all the things, even the environment also, Okay. consumables also. So because कुछ ये किसी भी टाइप के मैसिव फेलियर हो सकते हैं। आप सोचिए कि रनिंग ट्रेन है, उसमें कोई बोगी में लेट अस, आई डोंट नो, कुछ लोग जानते होंगे, आपको कुराली में फैक्ट्री है मेट्रॉनिक्स, तो बोगीज बनाती है इंडियन रेलवेज के लिए। अब उसमें सोचो अगर उसका ट्रेसेबिलिटी नहीं होगी और किसी बैच में बेस मेटल में डुप्लेक्स स्टील को यूज करते हैं, किसी में क्रैक पता लग गया, तो कैसे अगर ट्रेसेबिलिटी नहीं पता नहीं लग पाएगा, कितना कुछ स्टेक पे आ जाएगा। बहुत strict है। वही सारी वही bogies में issue आ जाएगा। दैट्स एग्जांपल आई वाज गिविंग, द होल प्लांट वाज A अनसेफ। similar example Nanda साहब है। या सर एक जी जी वेल्ड है, फरीदाबाद में कंपनी है, वो भी वेल्डिंग की पाइपलाइंस बनाती थी। सर वहां पे मैं गया था जी घूमने के लिए सर, तो मुझे पता चला कि जो भी एल्बोज वगैरह बना रही है वेल्ड के समय, वो कोड कर रही है कि ये इस मटेरियल का बना हुआ है, ये इतने टेम्परेचर बिल्कुल पे वेल्ड हो रहा है, ताकि अगर बिल्कुल उसमें कोई इशू है तो सारे उस पाइपलाइन को जैसे जैसे वो यूज हो रहा है एल्बो वगैरह सारे एक साथ चेंज हो पाए। सर ये मैंने देखा था बिल्कुल। एप्लीकेशन जी वेल्ड की। यस आपके कॉलेज लॉन्गवाल का लड़का है वहाँ पे 2-3। यस सर, यस सर। So
Should we move to Light is next? everywhere now, Sanuj ji. Yes, yes. Yeah, that's what I'm saying. यहाँ भी हम मैं भी जहाँ भी जैसे- जाता हूँ मेरा कोई ना कोई मिल जाता है कॉलेज वाला. So now come the material. Material refers to the product, base material, and the auxiliary materials. Although we touched this topic in the previous slide, the material used for the special process should be qualified. So it is not in terms of only chemical or mechanical things which are a must, but that is there are some regulations also like REACH, ROHS compliance, which is more related to health and safety. क्योंकि heavy metals अब allowed नहीं है use करनी. So those should be compliant as per the regulatory laws also. उनमें आपका साइनाइड्स नहीं होने चाहिए. So इस टाइप की रिक्वायरमेंट्स हैं. आपका फ्लेमेबिलिटी टेस्ट है HL3 क्लास. अभी आप आई डोंट नो कितने लोग कि फ्लेम टेस्ट होता है. जितने आपकी पैसेंजर व्हीकल्स हैं उसमें जो भी कारों की सीट कवर्स हैं, प्लास्टिक यूज होता है, उसका एक फ्लेम टेस्ट है कि इससे ज़्यादा देर में एस्केप टाइम मिलना चाहिए कि आदमी वहाँ से निकल सके. So those are also required. Then definitely has to fulfill all the technical specification and standards. Standards का केस जब आता है तो कई बार हम alternate just टेक्निक कुछ की एलिमेंट्स को मान के alternate मटेरियल ले लेते हैं, लेकिन कंप्लीट कंपैरिजन नहीं करते. जैसे इंडिया में 304 के ले लेंगे, एल भूल जाएंगे उसमें से, या अगर X1812 लिखा हुआ था तो X1812 ना लेके 304 को ब्लाइंडली रिप्लेस कर दिया, बिना जाने हुए कि अगर वो कहीं पे कोस्टल एरिया में काम कर रही है चीजें तो उसका क्या इम्प्लीकेशन सल्फाइड्स के और क्लोराइड्स के उस पर आएंगे. सो अगर कोई भी मेटल की रिप्लेसमेंट ले रहे हैं जो कि ड्राइंग में या डिजाइनर ने ओरिजिनल दी है, दिस मिस्टेक happens generally when the localizations happen or when the transfer of technologies happen from Europe to India or US to India. So in India people have a tendency to have a cheaper, to make the thing cheaper, और प्रॉपर कई बार 1:1 कंपैरिजन ना करके उसको चेंज कर देते हैं. और इंडिया हैज वर्स एनवायरमेंट्स देन द यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स. Right. सो वहाँ पे उसके स्टैंडर्ड्स को, स्पेसिफिकेशन को 1:1 मैच करके, और लोकल उसमें कई बार हो सकता है उससे कुछ एडिशनल ही लेना पड़े. सो दैट हैज टू बी टेकन केयर एंड देन फुलफिल द रिक्वायरमेंट डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल प्रोसेस डॉक्यूमेंट. उसके अलावा जो भी बाकी कि आपको किस किस चीज़ का, दिस मोर रिलेटेड अगेन ट्रेसेबिलिटी, इंस्पेक्शन कौन सा करना है, इसमें से कितने पीस को मेरे को चेक करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, फीफो फॉलो करना है, दिस ऑल दिस काइंड्स हैव टू बी. तो ये सारा कुछ सानू जी अपना क्वालिटी कंट्रोल में भी आ सकता है. ये सारा क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू ही आता है, बट जस्ट टू बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ स्पेशल प्रोसेस मैनेजमेंट. इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इट माइट बी सिटिंग अंडर क्वालिटी कंट्रोल, बट if you're talking about a special process control as a सर whole, ये तो परचेजिंग मटेरियल क्वालिटी जो सेक्शन होता है, परचेजिंग मटेरियल क्वालिटी वाला सेक्शन होता है इंडस्ट्रीज में जी. ये सर ROHS हो गया, क्वालिटीज रिपोर्ट हो गई सर, वो तो सब वही देखता है ना. नहीं 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 नहीं, इसको वो बहुत सिंपल procurement कॉस्ट कितना, आउट. मैं जस्ट let me brief it. Yeah, please. See, just to give you how the organization works, I don't know how much you know, but how really the organization works in a manufacturing. जो डिजाइन डिपार्टमेंट ने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकेशंस दी, वो प्रोडक्शन के पास भी जाती हैं, परचेज के पास भी जाती है. प्रोडक्शन इन हाउस प्रोडक्ट्स के लिए अपनी लिस्ट रेडी करता है, बिल ऑफ मटेरियल बनता है डिजाइन के थ्रू. आजकल ERP सॉफ्टवेयर SAP जैसे हैं तो डायरेक्टली SAP में डाउनलोड हो जाते हैं. जो परचेज के लिए प्रोक्योरमेंट के पास जाते हैं जब वो पार्ट, तो परचेज को ड्राइंग जाती है, उस ड्राइंग पे क्लियर स्पेसिफिकेशंस होती हैं. परचेज को उन्हीं के हिसाब से खरीदना होता है, उसके सर्टिफिकेट साथ लाने होते हैं एज अ सैंपल. देन दे सबमिटेड टू क्वालिटी डिपार्टमेंट. क्वालिटी डिपार्टमेंट भी जेनरिक वर्ड है. क्वालिटी के अंदर इन फर्दर ब्रांचेस हैं. फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन हो जाती है, देन इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल है, देन कैलिब्रेशन है, देन सप्लायर क्वालिटी एश्योरेंस है, देन इन प्रोसेस इंस्पेक्शन एंड फाइनल इंस्पेक्शन है. सो जब कोई कंपोनेंट डेवलप हो रहा है फर्स्ट टाइम, सो उसकी जो इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन बोल रही है, उसको जो प्रोक्योरमेंट वाला है वो खरीदता है टुगेदर विद, जनरली अगर कॉम्प्लेक्स चीज है तो SQA के साथ, एल्स वो सबमिट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन को. फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन उसकी इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन को, अगर इन हाउस फैसिलिटी नहीं है तो थर्ड पार्टी लैब के थ्रू, जैसे विक्रम की लैब है या और लैब्स हैं, उनके थ्रू वैलिडेट कराते हैं कि ये यस ये मीट करता है इस रिक्वायरमेंट को जो इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस है. वंस दे आर मेट, देन वो रेगुलर प्रोक्योरमेंट शुरू होती है, और इट इज responsibility of procurement department to ensure that. So it is not quality will randomly check them, because see, if you consider an organization, so
quality is not generating any revenue. So if you recall, so if someone has attended the session from Rajesh, he explained about value-added activities and non-value-added activities. So production is changing the shape of the product, which is adding values. But quality is not a value-added activity. So quality को हर organization छोटा से छोटा रखना चाहती है. So it is a responsibility. It's kind of organization को self quality control कर जाता है. Procurement की responsibility है कि वो सारे के सारे उस compliance के हिसाब से आएं और उनकी proper traceability identification हो. So this is procurement's responsibility. Quality उसको randomly check करता है just to assure that कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है. अगर गड़बड़ है तो through traceability non-confirmation को ability को manage किया जा सके. Actually, to add on just what Sanuj is saying, people are now saving the money on quality department, and giving this additional responsibility to procurement department only. But the problem happens when you have 3-4 vendors and a couple of vendors from China. So you Yes. procure the material from China. I'm just highlighting that because this is happening day in day night from in my company with my department. So when we are checking the material properties, and it is not meeting the manufacturing test certificate which is provided by the manufacturer from Correct. China or India or anywhere else. Anywhere, But anywhere. the point is why I am highlighting, because many a manufacturer nowadays after COVID, from China, we are seeing that their MTCs are forged more or less. They qualify, and after that they cannot sustain the quality consistently, and sometimes black sheeps are being sold, means wrong product specification or improper properties or heat treatment. So those when you sell to here end plants and end customer here and fail, then the traceability issue comes, and it goes to the procurement department, and procurement department does not have any quality. Because if you are in the quality department, a quality engineer, you should know more about the testing. If you are in procurement department, you should know more about the materials, because your job is to purchase the material. So you should know more about the grades, components, their names and all that. Nanda But sir, I'd like to add here कि point is कि the procurement material procurement department के जो लोग रहते हैं ना, उन पे एक प्रेशर होता है कि भी आपने प्राइसिंग रिड्यूस करके देनी है, जितना भी कम से कम में सस्ते में लेके देना है, और चीज चेंज नहीं करनी, पर सामान सस्ते में लेना. तो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर एक प्रेशर होता है कि वो नेगोशिएशंस एंड ऑल दैट में, और कई बार वहां पर हो सकता है वो उनको लगे कि नहीं यार ये चाइना वाला सस्ता मिल रहा है, वहां से महंगा मिल रहा है, व्हाटएवर. नहीं, नो प्रॉब्लम. सी मैं ये बोल रहा हूँ कि चाइना वाले हमारे पास कितने कंपोनेंट आते हैं जो बहुत बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं. राइट. And most of the customers visit us from China. They Right. say that when you reduce the amount, so the quality will automatically reduce. So Right, you can right. keep the quality and amount. This has to Really, be that is what is the balance has to be done with the procurement department. yeah. But I'm just giving you a difference Yes. between the department Sir, and now the it is considering the criticality of the product. अभी procurement department में भी, जैसे हमारी organization में ही है, procurement में भी welding engineer है. Okay. होना चाहिए. उस रिस्क को हम मिटिगेट करने लग गए हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो प्रोक्योरमेंट भी स्पेसिफिकली जो इस टाइप की चीजें हैं, जैसे हमारे जो वेल्डिंग से रिलेटेड फैब्रिकेटेड पार्ट्स है, उसकी प्रोक्योरमेंट उस वेल्डिंग इंजीनियर के थ्रू ही होती है. Yes. अब आप समझ लीजिए अंकित, the kind of jobs are available in different departments of the company. For मैं अभी गोदरेज में गया था सर. हेलो. हाँ बोलिए. गोदरेज में अंकित सिग्नल लूज हो गया, वो फ्रीज हो गया. बेसिकली क्या जो बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये बीटेक वालों का, कि ये सिर्फ फाइनल जब कर रहे हैं, जब अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ बीटेक पास आउट हो रहे हैं, तो इन लोगों को अगर इन चीजों का है कि यहाँ भी प्रोक्योरमेंट में भी जॉब मिल सकता है, और क्वालिटी कंट्रोल में अगर मैं टेस्टिंग में ज्यादा जाऊं, टेस्टिंग ऑफ वेल्ड्स, टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमेबल्स, एनडीटी टेस्टिंग, तो मैं ये टेस्टिंग वाले क्यूसी डिपार्टमेंट में भी जा सकता हूँ, और क्यूसी के सारे टूल्स भी स्टडी कर लूं, जो कि आपको 3rd ईयर में पढ़ाए जाते हैं. क्वालिटी कंट्रोल आई थिंक हमने तो पढ़ा है, तो आपको भी पढ़ाया जाएगा बीटेक में फाइनल ईयर और 3rd ईयर में. प्रोफेसर चक्रवर्ती थे, आपको पढ़ाया था उन्होंने क्यूसी का. तो वो अगर वो सारा कॉम्बिनेशन आप अपना पैशन आइडेंटिफाई कर पाए, तो आप एक बेसिकली आप एक जॉब में
जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल वैल्यू एडेड असेट हो सकते हैं। सी जरूरी बिल्कुल नहीं है कि एक्सपीरियंस के साथ ही आदमी सीखता है, आदमी अपने दिमाग से भी जीरो एक्सपीरियंस के साथ वैल्यू एडेड चीजें ऐड ऑन करके अपनी प्रोफाइल में नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। बना सकता है। Yes. should move. Yes, Yes, Sanuj ji. I got it. Okay. Then is the mother nature, which is another M. Mother nature refers to environmental conditions of the workstation or the area where this special process is being carried out. It is mainly related to temperature and humidity controls. So if you take example of painting, you have to do the painting somewhere between 15 degree to 35 degrees and humidity below 80, 75%, 80%. So if the temperature, the painting you're doing is not within that range, it will give you trouble. So environment also has its own role. In welding also, you cannot directly do that 0 degree temperature to start welding. So same is with the adhesive bonding. You have to first bring, if suppose you have any sheet metal which is made out of stainless steel and it is being produced at somewhere in the supplier, and consider the case of if you're talking Faridabad or Delhi, where the temperature in the summer goes up to 44, 45 degree, and it moves from a supplier and to the organization in a truck. So it will attain the temperature of 40, 45 degrees. But then you cannot do the directly the bonding, start bonding at the same temperature. So bonding temperature requirements are suppose 22 degree to 26 degrees. So you cannot do that. You just bring it the sheet metal into the air conditioned room and start bonding. No, you have to keep for the soaking. Let us say based on the experiment, let us say 8 hours you have to keep into that kind of stable environment so that it comes at that stable temperature. So environment is very important in any kind of special process, be it welding, adhesive bonding, painting, whatever you call it. So it has a very large role on the non-conformity. So environment is a very important factor, which sometimes the people who doesn't have the exposure or uh, have not faced really problems overlook it. So any point on this topic, or should move? Yeah, we Actually, should. impact of environment. I would just add on what Sanuj has said. Sometimes, the such we go for a cheaper material or cheaper elements, which may be dangerous to the environment. But in order to build up the business, we just go on that. And you never know, a particular country has a punishable offense on using that, and Yes, हाउ यू जिसे कहते हैं ना निकास करना। आप जब वेस्ट को जब उसको वेस्ट हो जाता है तो वेस्ट को आप क्या कहते हैं ड्रेन आउट करते हैं, तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होते होंगे ड्रेनिंग के। सनु बिल्कुल बिल्कुल राइट बिल्कुल। राइट बिल्कुल है, सो बहुत स्ट्रिक्ट। स्क्रैप को आपको हैंडल करने के लिए आपका हजार्ड स्क्रैप है, दैट यू कैन नॉट जस्ट डिस्पोज इट, लाइक यू हैव टू गो थ्रू स्पेशल एजेंसीज, यू हैव टू सेल थ्रू डिस्पोज थ्रू देम ओनली। सो लाइक हरियाणा में अगर तो ये एक प्योरली डिसएडवांटेज ही हो गया। अगर आप एनवायरनमेंट को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं और ज्यादा मार्जिन के चक्कर में आप कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड ऑन कर रहे हैं जो चीप है पर वो डेंजरस है एनवायरनमेंट के लिए, तो आपको उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हरियाणा में अगर बात करें आपका रेवेन्यू और कम हो जाएगा बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, और ये करना पड़ता है, बाइंडिंग है वो। अच्छा, स्पेशली एनसीआर बाइंडिंग है, राइट। बाइंडिंग है, आपका बिजनेस बंद हो सकता है। मतलब अगर आपको रिसेंट एग्जांपल लें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इवन उनको पता है। सनुज जी, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हो, फैक्ट्रीज की बात कर रहे हो। यहाँ पर बॉम्बे में सोसाइटीज का जो वेस्ट है, वेट वेस्ट जिसे बोलते हैं हम, बिल्कुल, तो वेट वेस्ट हम डिस्पोज नहीं कर सकते। वी हैव टू रिसाइकल इट इन आवर बिल्डिंग ओनली। अभी रिसेंटली रिसाइकलिंग ही करनी पड़ेगी, वो लेके नहीं जाती बीएमसी। पर वो अगर रिसाइकलेबल ही ना हो, नहीं, वो वेट वेस्ट रिसाइकलेबल होता है। ओके, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। वेट जो ड्राई वेस्ट है, मतलब प्लास्टिक और वो सब वो ले जाते हैं, लेकिन आपके पत्ते और ये सब चीजें जो वेट वेस्ट होता तो है, फिर आप अपना मतलब वो वाला पैसा भी आप काउंट करते हो अपने। हाँ जी हाँ, वो हमारे करना पास पड़ता है। मशीन लगी हुई है पूरी, और वो पूरा रिसाइकल होकर उसकी खाद बनती है और हम कंपोस्ट अपने बन जाती है, प्लांट कंपोस्ट बन फूड जाती में है। डालते रहते हैं आसपास। जैसे हमारे कैंटीन का जितना फूड वेस्ट है और जो Yes. गार्बेज वैसा निकलता है, उसको नहीं, इधर मशीन तो में डाल, कंपलसरी कर दिया सर, वो लेके ही नहीं जाते। कंपल्सरी है। नहीं, मैं तो इंडस्ट्री में बता रहा हूँ। अभी तो ऐसे हाँ, छोटा सा इंडस्ट्री में तो एग्जांपल और टफ होगा, इंडस्ट्री में और टफ होगा। अभी मतलब मैं छोटा तो सा नॉर्मल एग्जांपल सोसाइटीज की बात कर रहा हूँ। आपको वेस्ट का जो प्लास्टिक जो आप यूज करते हो ऑर्गेनाइजेशन में, आप पर ईयर में कितना प्लास्टिक कंज्यूम करोगे,
और किस वेंडर से लोगे, ये आपको नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर करना है। हर साल उसको रिव्यू करके बताना है। अगर आपका वेस्ट, और वो गवर्नमेंट कभी भी आपकी बाइंग चेक कर सकती है, अगर आपकी बाइंग उससे ज्यादा निकली देन यू विल बी पेनलाइज्ड। सो And दिस there is one थिंग, more point, Sanuj ji. There is और one ये more point. एक मिनट There जी, are एक मिनट सर जी, एक मिनट, ये जो पेनल्टी है ये कोई अपने आपका जो एनुअल टर्नओवर उसका परसेंटेज होती है कि फिक्स्ड है पेनल्टी? no. The penalties they can decide whatever they like. The worst nowadays they are even they close the factories. Oh, They close directly. Nanda They will Saab, there is close one more directly close point. it. There is one more point. Ki if you are, for example, you are making, you are a shoe manufacturer, example. So shoes are being used and they are then after that they are thrown out, right? Then the shoe factories have to buy back all the thrown out shoes. oh, उनको बाय बैक करने पड़ते हैं रिसाइकल करने के लिए, और वो बाय बैक रिपोर्ट होती है नेशनल पोर्टल, और वो भी एजेंसीज अब खड़ी हो गई हैं जो बाय बैक करती है। जैसे बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स पेप्सी को वापस बाय बैक करनी पड़ती हैं, या वाटर बॉटल्स जो है ये अपने जो भी बड़ी कंपनीज है उनको बाय बैक करने, इस तरह के सारे मटेरियल्स बाय बैक करने पड़ते हैं लास्ट में स्क्रैप से उठा के। और उन्होंने उतना बाय बैक किया कि नहीं किया। हाँ, ये तो बहुत टफ है, बाई बैक करना तो बहुत टफ लेकिन काम है। जो भी टफ है, लेकिन बाहर तो मिल रहा है ना, तो लोग दूसरी एजेंसीज कलेक्ट करती हैं और वापस कंपनीज को बेचती हैं। एनवायरमेंट तो उनका एक इज प्रोसेस है। वेरी स्ट्रांग। एनवायरमेंट पे गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है अभी धीरे धीरे So, स्ट्रांग हो रहा है इंडिया, बहुत अभी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इंटरनेशनली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो और इसमें फिर रिसाइकलिंग का जो बिजनेस है वो भी आदमी सोच सकता है। बहुत बढ़ रहा है सर, रिसाइकलिंग, ओनली कलेक्शन इज अ बिग बिजनेस। रिसाइकलिंग तो बाद की बात है, इवन अकेला कलेक्शन अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि इनको ऑडिट होता है इनका कलेक्शन पे, बड़ी बड़ी कंपनीज का, तो इनको कलेक्ट करना ही पड़ता है वापस। हम भी करते हैं, हम भी जो टेस्टिंग करते हैं ना, बहुत सारा मेटल स्क्रैप हो जाता है, तो मंथली लास्ट वीक में हमारा एक आता है वेंडर, और पूरा जो स्क्रैप है वो ट्रकों 2-3 ट्रक भर के बेचते हैं, और वो फिर वापस जाता है मेल्टिंग शॉप में, और वहां पे सेपरेट करके वो मेल्ट रिसाइकिल करता है। तो ये पूरा बिजनेस है, वो लेके जाता है, तो मतलब वो हमको पैसा दे रहा है, मतलब हम स्क्रैप बेच रहे हैं, तो हमारा रेवेन्यू वहां से भी आ रहा है, पर वो बंदा आगे बेच रहा है तो उसको भी रेवेन्यू मिल रहा है, और आगे वो मेल्टिंग में जा रहा है, तो पूरा बन के फिर से वापस आ जाएगा प्रोडक्ट। नंदा साहब, आप लोग तो शुक्र मनाओ कि पैसा मिल रहा है, लोगों को पैसा देना पड़ रहा है बेचने का, देना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपका जो जो आपका जैसे आपका जो फॉस्फेट का वेस्ट है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है, अगर हरियाणा की बात करें तो उसको उठवाने के लिए आपको पर केजी देना पड़ता है पैसा गवर्नमेंट को, डिस्पोज ऑफ करने के लिए। राइट। तो वो है कि जो एनवायरनमेंट को डेंजरस करेगा उसके लिए अगर आप डिस्पोज करने का आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे हमारा है, हम तो मेटल स्क्रैप है, स्टील स्क्रैप है, ये बहुत यूजफुल है, तो इसके लिए पैसा हमें मिल रहा है, राइट, हमें मिल रहा है, राइट। ओके, so moving further, there is another M which I will just go back quickly. So another M which I have written here, 7th M, which is measurement. This is also being considered nowadays. So what this means? This means if we are taking measurements, जो नंदा ने बोली थी बाद में विक्रम ने, SPC और क्वालिटी टूल्स आपने पढ़े होंगे। अगर आप स्पेशल प्रोसेस, किसी भी स्पेशल प्रोसेस की, बीट वेल्डिंग, बीट पेंटिंग, बीट व्हाटएवर, अगर आप उसके पैरामीटर्स को लिस्ट डाउन कर रहे हो और उसके कंट्रोल चार्ट या रन चार्ट बना रहे हो, देन दिस कम्स अंडर मेजरमेंट, और उसको आप स्टडी करके यू कैन ऑलवेज ऑप्टिमाइज योर पैरामीटर्स टू सेव योर इलेक्ट्रिसिटी। आपको करंट सेटिंग्स कितनी लगनी है, विच विल हैव अल्टीमेटली इम्पैक्ट ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। आपको इंस्पेक्शन कितनी बार करनी है। लेट अस टेक एग्जांपल, आपका अगर फॉस्फेटिंग प्लांट है तो आपको उसमें कंसंट्रेशन ठीक चल रही है नहीं चल रही, एवरेज शिफ्ट में 2 बार चेक करनी पड़ जाती है, 3 बार चेक करनी, तो कैसे डिफाइन करोगे? सो इफ यू हैव अ रन चार्ट फ्रॉम योर पास्ट 3 months 6 months, you can define, okay, my elements remains well in the control up to 8 hours. I don't need to check it. If I check it in once in a shift, it's okay. So measurement is also 7th time which is being considered nowadays. So in a way, there is a scope of consultancy in measurement, right? Yes, definitely. It's a very big field now. Then there are certain which Purisa, you were asking which standards they can refer. So if the people who are really interested to go into the welding, and then the welding is not really welding which we're talking about the process parameter control, it's about the welding process deployment also. So you can 15085 to 15085
2 is the for the railway applications. The people are interested into railway applications, but this is now not being limited to railway. This will be going to other industry like shipping and all this, but primarily it started from railway. Then in India, which is a new topic which is getting very popular, is ISO 3824-2 quality requirements of fusing welding in addition to ISO. So this is a very new field. I mean, it's very fast growing. जो quality systems में जो लोग जाना चाहते हैं, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग कर ली, वेल्डिंग की नॉलेज रख ली, एंड दे वांट टू गो इनटू ऑडिट कंपनीज लाइक TUV, so and they want to go into the quality systems. So there is also scope. So they can do some lead certification auditor course, and they can join these kind of companies. There are a lot of companies, BSI, TUV, etc., etc. Then the newest field which is coming to India is adhesive bonding. So this is a new field which is opening up very much into all kind of e-vehicles, railway industry, shipping, aerocraft, everything, everywhere. And I'll give one more point here, sir. As an entrepreneur, मेरा दिमाग से चल जाता है. तो एडेसिव बॉन्डिंग के केस में मैं आपको एक बात बता दूं, इंडिया कंपैरेटिवली मैन्युफैक्चरिंग में सस्ता कंट्री है. अगर कोई यूरोप की कंपनी आपके साथ टाई अप करने को तैयार है कि आप यहाँ पर एक प्लांट लगा दो, हम आपको टेक्निकल सप्लाई करते हैं, आप फॉर्मुलेट करके एडेसिव रेडी कर दो, तो आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बीइंग एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड हु नोज अबाउट द थिंग्स, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले टाइम में. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया में बन रही हैं, टेक्निकल चीज चाहे ना बनती हो, और आप उनका एक टाई अप के साथ आप उनके साथ एक बड़ा काम कर सकते हो. इसमें जो यहाँ पे जस्ट अंकित को मैं इसी में एक पॉइंट बताना चाहूंगा. अंकित, जब आप सीवी के लिए किसी को गाइड कर रहे हो कि कैसे सीवी बनाना चाहिए, तो जैसे इनमें से सपोज आपने ISO 3824 पढ़ लिया और पढ़ के आप फैमिलियर हो गए, तो मतलब आपने इसको यूज नहीं किया प्रैक्टिकल लाइफ में बिकॉज आप फ्रेशर हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, आपने जस्ट पास आउट किया है, पर आपने इसको पढ़ लिया है किसी वजह से. ये सिर्फ ये रेफरेंस ही नहीं, कुछ भी चीज आपने पढ़ ली है, तो आप अपने सीवी में ये कहीं मेंशन करिए अपने कोर में कि यू आर फैमिलियर विद ऑल दीज थिंग्स. क्योंकि आजकल जो सीवी सर्च भी होता है ना, जहाँ की से होता है, की नोट से होता है, की नोट से होता है. तो अगर मान लो किसी ने ये देखना हो कि मुझे वो कैंडिडेट चाहिए जो ISO 3824 में वो नॉलेज रखते हो या उनके सीवी में वो चीज हो, तो आपका उसमें आ जाएगा. तो कम से कम इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. एक बार इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर आपका स्किल है और आपका पैशन है. एक पॉइंट और मैं ऐड करूंगा यहाँ पे नंदा साहब, सॉरी मैं थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप पे बोल रहा हूँ यहाँ पे. नहीं वो ये है कि अगर आपके स्टूडेंट्स कोई चीज रेडी करते हैं या इस तरह की कोई स्टडी करते हैं, या आपको लगता है कि हमें सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज हैं और मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट चाहिए और हम लोग साथ में मिलके एक बड़ा काम कर सकते हैं, तो बहुत सारे एलुमनाई एंटरप्रेन्योर्स हैं. और इवन जो एंटरप्रेन्योर नहीं भी हैं आज की डेट में जॉब में, और जो एंटरप्रेन्योरशिप में जंप कर सकते हैं, वो लोग आपके साथ मिलके कंपनीज खोल सकते हैं गाइस. ऐसा नहीं कि आपको यंगस्टर्स को ही मिलके कंपनी खोलनी है, आपको साथ में 2-4 एक्सपीरियंस्ड बंदे भी मिल जाएंगे जिससे कि आप कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. एप्पल जब स्टार्ट हुई थी तब उनका CEO स्टीव जॉब्स नहीं था, तब उनका CEO एक पेप्सी से आया हुआ बंदा था. तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस्ड बंदा लिया था जो कि CEO बनाया गया था ताकि कंपनी को मैनेज प्रॉपर्ली किया जा सके. तो आपको मैनेजमेंट के लिए सीनियर लोग के लिए मिलेंगे और आप एक नया आइडिया लेके कंपनी पुश कर सकते हो. और ये चीजें बहुत जगह पे होती हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको एनर्जी, पूरा सिस्टम स्टडी करने की वो ताकत तो सब चाहिए. दैट इज द पॉइंट. मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि मैंने कभी भी मतलब मैंने एक सब्जेक्ट में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पढ़ा था, फिर मैंने कभी उसको यूज नहीं किया. आई नेवर यूज्ड इन माय एमटेक और इवन PhD. In PhD I only like somebody is using, I am sitting there. So what happens during this I understood कि यार ये टूल बड़ा ना इंडस्ट्री में बहुत काम का टूल है. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ये 1 करोड़ का आता था तब, तो ये बड़ा महंगा है और ये बहुत ही वायबल टूल है और ये इन्वेस्टिगेशंस के लिए बड़ा इजीली यूज होता है. तो मैंने इसके बारे में इन डेप्थ स्टडी की. मैंने स्पेशली वो बुक ली जिसमें माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ा, तो अपने आप से मैंने उसको सेल्फ स्टडी करा. तो मैंने अपने CV में लिख दिया एक जगह कि आई एम फैमिलियर विद दिस टूल.
तो मेरा जब पहला जॉब था, मुझे अभी भी याद है, वो इसी के बेस पे था, वो यहीं पे अड़ गया था, वो यहीं पे, यार मुझे यही आदमी चाहिए। तो मैं उस पे, मेरी एक आदमी ने वो टूल अपनी क्लास में पढ़ा और एज ए सब्जेक्ट को यूज किया, पर मेरी सेल्फ स्टडी से इन डेप्थ नॉलेज इतनी ज्यादा थी कि एक आदमी जो उसका यूजर है उससे भी ज्यादा नॉलेज है। तो मैंने उसको, जब उसने क्वेश्चन पूछा, तो आई सेड दिस क्वेश्चन इज इन माय डोमेन, तो यहाँ पे आप पूरा अटैक कर दो, क्योंकि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था कि मैं ये फैमिलियर वर्ड लिखूंगा तो वो मेरे को वहां पे आएगा, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। तो आपको ये देखना है कि कौन सी आप इंडस्ट्री में जा रहे हो इंटरव्यू देने या अप्लाई कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या उसमें आप अपना और ग्रिप दिखा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने जो 4 ईयर में जो पढ़े हैं सब्जेक्ट्स उन्हीं में ही रिलाई करो, नो। जो आप इवनिंग में जाके लाइब्रेरी में पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, वो भी अपने सीवी में आप लिख सकते हो। बट जब क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम से पूरा डिटेल्ड में बताने की हिम्मत और काबिलियत होनी चाहिए। तो वो अगर है तो आप अपने सीवी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्लेवर आउट करें, सिर्फ फेक ना करें चीजों को कि यार मैंने सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए फेक कर दी चीजें, तो वो बाद में जब रिजेक्ट होगे ना तो सेल्फ मोरल बहुत डाउन होगा। तो आपको लिखना है फैमिलियरिटी, पर उसमें आपको होमवर्क और ग्राउंड वर्क बहुत सॉलिड करना पड़ेगा कि अगर मैं कोई चीज लिख रहा हूं जो मैंने अपने 4 इंजीनियरिंग में नहीं की, पर मैं लिख रहा हूं, तो उसको ये देखो कि तुमने बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी करके उसको अपना बनाया है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूरा जस्टिफाई तरीके से, एक पैशनेट तरीके से उसको आंसर करें, तो मेरे ख्याल से वो जॉब आपका है। अच्छा, इसमें अंकित एक चीज और है, जो भी है इसमें कुछ, दिस इज नॉट ओनली, जो प्रेजेंटेशन आज हमने दी है, इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर इसमें देखेंगे लास्ट में क्रिम्पिंग ऑफ वायर हार्नेस, दिस स्टैंडर्ड इज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। जो इलेक्ट्रिकल के लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं, वो इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितनी वायर हार्नेस इंडस्ट्री है, अगर इससे आप फेमिलियर हो, क्वेश्चन वो पूछने शुरू करता है जैसे हम ही पूछने शुरू करते हैं, पुल टेस्ट क्या होता है नहीं पता होता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को। तो दिस टॉपिक्स आर रिलेटेड टू ऑल डोमेन्स। आपके इलेक्ट्रिकल के लोगों को भी आप इसको फॉरवर्ड की। मैंने इसका फेलियर किया था, ये हार्नेस टूट गई थी और एक बंदे की डेथ हो गई थी इधर, तो दुबई पुलिस इन्वॉल्व थी, तो ये सब बहुत ये सब आया था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी टेस्टिंग होती है। तो मेरे को तो इतना नॉलेज नहीं था। जब फेलियर आया तो हमने उस वक्त बुक्स खोली और अपनी स्टडी की और पूरा अंडरस्टैंडिंग लिया और उसको सॉल्व कर दिया। तो आपको ये भी होना चाहिए, आप सबके मास्टर नहीं हो सकते, आपको इतना स्किल होना चाहिए कि जब कोई टास्क आपके प्लेट पे आया है, आपके टेबल पे आया है, तो आप उसको सेल्फ स्टडी करके उसको पूरा निपटा सकते हो जैसे कि उस स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो क्लाइंट को कि ये ऐसे ऐसे हुआ है। तो भी ये आपके एडिशनल स्किल्स में काउंट होता है कि आपको हर चीज का नॉलेज नहीं है, पर अगर कोई टास्क दिया जाता है तो आप ओवरव्यू तो है कम से कम, और पैशन से निपटा सकते हो आप। ये स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स हैं। ये आप अपना जो भी प्लीज फॉरवर्ड टू, फील फ्री टू फॉरवर्ड टू योर, and this is on YouTube, the video is available, so you ask all your friends because to watch this presentation is not related to only mechanical engineer. If you read the standard DN 670, it is related to material science and mainly for chemical engineers, because the chemical engineer who is passed out with a chemical degree, and if he or she has done a adhesive engineer course, if one can afford on बहुत फर्क पड़ता है, राइट। आपने सिर्फ रेलवे व्हीकल और पार्ट्स में लिखा हुआ है, मेरे हिसाब से DIN 670 ये सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल, सबके लिए ऑटोमोबाइल एज वेल, कंप्लीटली एप्लीकेबल है, हर चीज पे अवेलेबल है। मैं इसमें विक्रम क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा सेल्फ अपने को फाइनेंस कर सकता है और वो चाइना के थ्रू, क्योंकि इसमें पार्शियल स्टडी ऑनलाइन होती है, टेस्ट आपको भी इंडिया में नेक्स्ट ईयर तक आ जाएंगे। अगर आपने केमिकल से इंजीनियरिंग की है और साथ में आप एडहेसिव इंजीनियर का कोर्स कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन, so your job prospects are immediate with the big companies like Airbus, Alstom, Siemens, Godrej, shipping industry complete. So these are not very costly. Guys, it's a very big input, very big input. Please don't limit it to mechanical engineers only. Yes, electrical engineers हैं, crimping wire harness पे जो IPC है, IPC का certification होता है, which is valid for I believe 2 years, I believe it is valid.
it is done in, you can do it in Bangalore. You can IPC Bangalore करवाता है इसको. अगर लोग ज़्यादा हो तो आपके साइट पे आकर सर्टिफिकेशन कर देते हैं, और अब तो ऑनलाइन भी होती है. There are charges which you can go to the site of IPC and check it. So जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, अगर वो सर्टिफिकेशन होल्ड करते हैं तो देयर इज एडिशनल एडवांटेज. तो जैसा गाइस, मैं तो आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आप अपने डिपार्टमेंट से बात करिए, अपने कॉलेज से के पूरे डिपार्टमेंट से बात करिए, TNP से बात करिए. तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उनका कोई ना कोई बंदा बुलाइए ताकि सभी लोगों को मिल सके. यू गाइस कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. यस, पर यूजर ठीक है सर, चार्जेस ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द डे द कॉलेज कम्स इन तो इट विल बी वेरी यूजफुल ना. यस. अगर फोन नंबर चाहिए तो मेरे से ले लेना, फोन नंबर कांटेक्ट नंबर. यस, बिल्कुल सर, आप डिस्क्रिप्शन में चाहे तो मुझे दे दीजिएगा, मैं डाल दूंगा उसको. अंकित, आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट करते हैं या आपके जो फाइनल ईयर हैं जो? नहीं सर, अभी तो नहीं करते हैं. तो ये देखिए, आपको करना चाहिए. वहां पे बॉम्बे में बहुत होते हैं. बॉम्बे में तो हर महीने एक ना एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मटेरियल्स, नेशनल एसोसिएशन ऑफ करोजन इंजीनियर, नेस, ये सारे होते हैं. साहब, एक छोटा सा लेक्चर या फिर एक मैंने अपने पहले लेक्चर में पुरी साहब ये बताया था, पर मुझे लगता है कि शायद ये आप, बिकॉज ही इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट, सो आप बताएं कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाएं. वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, पैसा बिल्कुल नहीं लगता है. आपको कोई पेपर लिखने का भी जरूरत नहीं है. आप जस्ट एज ए विजिटर जाएं. आपको पूरी क्लास जा सकती है, वहां पे टूर बनाया जा सकता है. राइट. तो आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई पेपर लिखना है और पेपर ही प्रेजेंट करना है तो ही किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाया जा सकता है. बिल्कुल नहीं. आप एज ए विजिटर जाएं, एज ए डेलीगेट जाएं, वहां पे लोगों को मिलें, क्योंकि आप जॉब सीकर्स हैं. आपको अंडरस्टैंड करना है कि मुझे अब कहाँ पे जॉब देखनी है. राइट. तो उसके लिए आपको पहले एक्सपोज होना पड़ेगा, उस मार्केट में जाना पड़ेगा अपने रिलेटेड. जैसे हीट ट्रीट शो अभी हुआ है चेन्नई में. मेरा फ्रेंड है IIT रुड़की का, वो प्रेजेंट करके आया. आज मॉर्निंग में ही मेरे को कॉल कर रहा था वो. तो हीट ट्रीट शो हुआ है. तो अभी मटेरियल्स के भी होते रहते हैं, वेल्डिंग के भी कितने कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं. ये थोड़ा सा आप अपना नॉलेज लेवल बढ़ाइए और ये आप करिए इसमें थोड़ा सा. और अगर कोई एलुमनाई से सपोर्ट चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं हर जगह पे, कहीं पे भी हो. बॉम्बे में चाहिए, कहीं पे भी चाहिए तो हम सपोर्ट दे सकते हैं. वहाँ पे कोई बुकिंग करनी है, कुछ करना है तो आई वुड सजेस्ट मिनिमम 10-15 people you can travel to Mumbai or to whichever place, and you just participate in minimum 3-4 conferences, 5 conferences in your 1 year's time, and that will actually help you. मैं आपको बताता जा रहा हूँ, मैं अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ. मैंने PhD IIT बॉम्बे से कर रहा था. मैंने एज ए आपकी तरह कोऑर्डिनेटर था अपने डिपार्टमेंट का, प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. मुझे भरोसा था कि मुझे जॉब मिल जाएगा कैंपस में. राइट. फिर भी मैंने 15-20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपने आप को एक्सपोज किया. वहां पे मैंने पेपर दिए, मैं पेपर प्रेजेंट किया. कईयों में डेलीगेट गया, कईयों में एज ए ऑर्गेनाइजर गया. मैं, क्योंकि मैं ASM का बहुत एक्टिव मेंबर था, मैं नेस का मेंबर था, मैं IIM का मेंबर था. तो ये सारे मेंबर होने की वजह से मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हिस्सा रहने लगा. तो ये आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब आप जाते हो कॉन्फ्रेंसेस में, अपने आप को एक्सपोज करते हो, तो आपको ये पता लगता है कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, मुझे किस तरफ अपने आप को बेचना है, या मुझे कौन सा पर्सनैलिटी का ट्रेट शार्प करना है. ये सारी चीजें आप कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है. हाँ जी पुरी साहब. ठीक है सर, आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी वैल्यूएबल व्हिच हैज बीन कम अप एंड फैंटास्टिक टू सी both of you in after such a long time. मैं सानुज थैंक यू रियली. ये जो टॉपिक था, एक्चुअली वेल्डिंग का मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ, मुझे टॉपिक नहीं पता था सीरियसली. स्पेशल तो मैं सोच रहा था कुछ वेल्डिंग में होगा, बट ये जो आपने जो एडिसिव का खोल, ये ऑल टुगेदर मेरे लिए भी न्यू है. मैं तो इसमें और स्टडी डेफिनेटली करूंगा, क्योंकि मेरे इधर वेल्डिंग में ना बहुत सारा केस स्टडीज आते रहते हैं जो फेल होते रहते हैं. पर जैसे ही ये जब मैंने आपका जो प्रेजेंटेशन एज अ इवेंट, आई फील कि इसमें और डिगअप होने का मुझे अपॉर्चुनिटी है, और मैं अपने क्लाइंट्स को अच्छे से और बता सकता हूँ कि ये भी आप एक्सप्लोर करिए. डोंट डिपेंड ऑन ओनली अ वेरी चैलेंजिंग joining process which is welding, especially with the material is very challenging, Right. So people can explore, especially if the material is thin and all that. So I think it is a very good topic for me to dig in and explore more.
Thank you. Thanks, Sanuj. Thank you, Vikram. Thank you, And Sanujji thank you, Ji. Thank you, and Puri sir. Vikramji. Thank you. I will end the stream just hold on. Thank you.